अला रसूलिहिल करीम। प्यारी बहनों, हमारा आज का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है वुमेन एनजीओज, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आगाज करें, मैं तमाम बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने मोबाइल फोन को जरा स्विच ऑफ कर लें या किसी और मोड पर रख लें। प्यारी बहनों, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो कुरान रेसिटेशन विद ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद वेलकम एड्रेस और फिर एक बहुत ही अहम विषय पर पैनल डिस्कशन करेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी पैनलिस्ट बहनें मौजूद हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही अहम की नोट एड्रेस भी होगा। इसे पेश करेंगी हमारी हर दिल अजीज सिस्टर नीलम शुक्रामनी जी, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जब भी बुलाया जाता है, हम इन्हें पहले भी सुन चुके हैं, बहुत ही मोहब्बत से तशरीफ लाती हैं। और आखिर में कंक्लूडिंग एड्रेस होगा। इसी एड्रेस के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की समाप्ति होगी, जिसे सिस्टर शाइस्ता रफत साहिबा करेंगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब आखिर तक इस प्रोग्राम में बने रहें, ताकि इस प्रोग्राम से पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आवाज दूं हमारी बहन मिनाल कहकशा को कि वो कुरान रेसिटेशन पेश करें। बहन मिनाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वअऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम वला तंकुदुल ऐमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाहा अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाहा यअलमु मा तफ़अलून। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मिनाल। अब मैं ट्रांसलेशन के लिए बहन मोहसिना साचुरा को आवाज दूंगी कि वो ट्रांसलेशन पेश करें। मोहसिना साचुरा जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह न्याय और भलाई और नातेदारों के हक अदा करने का आदेश देता है और बुराई और अश्लीलता और जुल्म व ज्यादती से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम शिक्षा लो। अल्लाह की प्रतिज्ञा पूरी करो जबकि तुमने उससे कोई प्रतिज्ञा की हो, और अपनी कस्में पक्की करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है। सच ही फरमाया अल्लाह ताला ने। थैंक यू मोहसिना साचुरा बहन। अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूंगी बहन फाखरा तबस्सुम को। बहन फाखरा तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया आरिफा साहिबा। आज हमारे बीच उपस्थित विभिन्न एनजीओ से आई हुई विशिष्ट बहनें, इस कार्यक्रम में आपका आत्मिक अभिनंदन करती हूँ।
जो मानव कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए अपने तौर पर निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। परंतु जब सब मिलकर कार्य करें तो और भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। इसी एहसास के साथ जमात इस्लामी महिला विंग ने आज इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको आमंत्रित किया है, जिसमें आज मौजूद हमारी समस्त बहनों में कीनोट प्रेजेंट करने वाली बहन हमारी नीलम शुक्रमानी जी हैं, जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हमारे दरमियान तशरीफ लाई हैं। इसी तरह को फाउंडर ऑफ मजलिस की फ्लेविया एग्निस जी हैं और सफा ऑर्गेनाइजेशन से रुबीना नफीस फातिमा जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी माहिती अधिकार गुजरात पहल से डॉक्टर पंक्ति जोग जी, जन कल्याण शिक्षण प्रशिक्षण समिति से पीलीभीत से हैं हमारी तबस्सुम नाज जी, फ्रंट पीठ से डॉक्टर शरनाज मुथु जी हैं और ट्रेजर ऑफ विंग्स डॉक्टर जरीना पीपी। इसी के साथ साइट्स कलेक्टिव बेंगलुरु से हमारी सिस्टर बी के शकुन डोंडिया केट जी हैं और रिसर्च स्कॉलर ऑफ जेएनयू सब एडिटर और ई मैगजीन से हमारी मॉडरेटर शाइमा एस हैं। इन तमाम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे बीच उपस्थित इसके अलावा हमारी समस्त मुशावरती कमेटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की बहनें और हमारी नेशनल सेक्रेटरीज अतिया साहिबा और रहमतुन निसा बाजी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तमाम श्रोतागण का भी मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ और तमाम से मैं विनती करती हूँ कि आप अंत तक इस प्रोग्राम में बने रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने का एक सुनहरा मौका मिला है, इसमें हम अपना आत्मनिरीक्षण करें और ये जो एनजीओ निस्वार्थ भाव से हमारे दरमियान अपनी सेवा दे रहे हैं, इनके साथ मिलकर काम करने की हमारे अंदर प्रेरणा आए। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। फिर से दिल से एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बहन फाखिरा तबस्सुम। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वेबिनार के असल थीम की तरफ, और वो है हमारा आज का पैनल डिस्कशन। और इस पैनल डिस्कशन की मॉडरेटर हैं हमारी बहन शाइमा। बहन शाइमा ई मैगजीन औरा की सब एडिटर हैं और रिसर्च स्कॉलर ऑफ जेएनयू हैं। मैं बहन शाइमा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस पैनल डिस्कशन को शुरू करें। बहन शाइमा। जी शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी ओके, थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच फाखिरा तबस्सुम जी ये मेरे को हैंड ओवर करने के लिए, एंड I welcome all of you to today's program, and I hope that all of our viewers, participants and organizers will find it to be a fruitful program. तो पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ दो चीजें मुझे कहनी है। एक तो कुछ थोड़े ब्रीफ फॉर्मेट और रूल्स इस पैनल डिस्कशन के, और फिर कुछ comments या remarks before we begin the discussion. The panel discussion will be multilingual in the sense that जिसको English में comfortable है वो English में बात करें, हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी में बात करना है तो वो languages में बात करें, कोई मसला नहीं है। Secondly, time that has been given to us is 1 hour, and क्योंकि इसके बाद एक keynote address भी है, and there are 1 hour 7 speakers. So I will try my best to keep on time, and I would request all of you to respect each other's time as well. So then coming to the format, ideally it would have been good to have many questions and a kind of conversation, लेकिन क्योंकि वक्त कम है, speakers हैं
और बहुत experienced speakers हैं, तो I will be essentially asking you one detailed question और आप उसमें 7 से 8 मिनट के अंदर आप उसमें अपने एनजीओ से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स रखिए और एक जनरल comment भी रखिए कि about the NGO sector and the current challenges, the socio-political challenges. So combining both of these things, I hope that we can have fruitful conversations. And and अगर किसी को मतलब पहले बोलना है, somebody is in urgent thing to leave, then please message me privately on the chat and we can get that arranged. So before I come to the individual speakers, there are certain points that I would like to start with, just to put these, sort of flag these points and put them out there so that in our conversation we can sort of keep track of them. One is, of course, that there are several structural, long-term and complicated problems facing Indian society today, in which the NGO sector and NGOs exist. So what role do these NGOs, do your NGOs, do you or have you, play in this kind of an atmosphere? So keeping that grounded, कि आपके एक्सपीरियंस में जो आजकल का माहौल है उसमें एनजीओ सेक्टर और एनजीओस की क्या यूनिक चैलेंजेस हैं जो शायद पहले ना रहे हों. Second point is again something that is a very frequent debate. I'm sure कि आप लोग कहीं भी जाते हो तो आपको ये पूछा जाता होगा कि एक तरफ मतलब एक बाइनरी या एक contradiction दिखता है कि there are many NGOs in India today. मतलब even if you only look at like women NGOs that work on women, there are thousands and thousands of NGOs. And simultaneously, there are many long-term problems. If you look at the recent data on NFHS, on the health data or the education data, it seems that things are actually getting worse in some senses. So how do you reconcile the immense growth of NGOs with the fact that many structural problems seem to be persisting? And the third point that I wanted was, since we're all talking about women NGOs, women-focused NGOs, the questions of gender, ये बात बहुत obvious है कि women एक homogeneous category नहीं है. So when we talk about women, and आप सब लोग अलग-अलग women, अलग-अलग groups के साथ काम करते हैं, so how do you keep the broader needs of women, the ideas about safety, empowerment, education, etc. in mind while working on and working with different groups? लोग अपने social identity, अपने region, अपने language, अपने marginalization, history के साथ आपके पास आते हैं, तो इन differences को आप कैसे manage करते हैं? And finally is that it is an obvious thing that there is an immense atmosphere of surveillance, और आजकल NGOs को उस atmosphere of surveillance में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है. Particularly if you're working on certain topics, you're outspoken, तो बहुत जल्दी financial irregularity के नाम पे, transparency के नाम पे बहुत सारे मतलब either it can get banned, either the financial the sources can get stopped. So ये जो एक intense surveillance का माहौल है उसमें आप लोग कैसे function करते हैं? So these are some points that I wanted to put in front of the house. Coming to our first speaker, Flavia Agnes. Flavia Agnes, who is the co-founder of Majlis, which is a very well-known legal NGO which has intervened and helped with the legal needs of women, such as whether it is matrimonial cases, custody, divorce, domestic violence, and other things, and is also a legal scholar. So, ma'am, I would like to ask you one question, which is that you have often spoken about the complicated relationship between the law and politics, similar to the NGO sector and politics. So why did it become necessary in the first place to have an NGO that provides access to legal services? Matlab, technically, if there is a law in place and it is easy to access it, if it was that the case, why do women find it difficult to access these services? And what kind of very particular legal help do women need in today's world? Thank you very much for inviting Ma'am, me you're today. muted. Am I? No, I'm not muted. Can you hear? Yeah, we can hear you. You can hear me? Okay.
Thank you. We started in 1991, around that time. Our registration happened in 91. So we are in existence for like over 30 years. We are an all-women NGO. And our services are dedicated to women. And why we started, in fact, I start with my own case. When I was going through my own legal problems, I realized that most of the mainstream lawyering is not affordable to women. And women don't have faith in state legal aid. And you need, like, while a lot of lawyers, a lot of husbands who are oppressing their wives get very adequate and very good legal advice and strategies even before the case starts. Women start thinking about their case only after they have lost all their rights. So you need somewhere two things are important. One is that women need to trust their lawyers. Most of the women don't trust their lawyers because everything is so commercial, and they feel that since they cannot afford the fees that the husband is offering to his lawyer and the status of the husband's lawyer, etc., women need someone they can trust completely with their case. Even if they win or lose is secondary. That is along the way, and the lawyer has nothing much to do with it. What the lawyer has to do is give one's best to this particular case. So that trust women should have, and that's why we started this. Secondly, with the woman lawyer, they feel much more at ease. They feel much more at ease in the sense that they can talk about intimate aspects of like domestic abuse, marital rape, rape of a young girl when she gets raped. All these things are very important for them to speak to a woman rather than to speak to a man, men lawyers or legal interns, etc. Now here, one more thing is here, why we kept the name Majlis. That we are not a Muslim NGO. We may have some Muslim, but overall we are a secular organization. But we wanted Muslim women to feel at ease. With a name like Majlis, women feel much more at ease that I can talk, being a minority and being a woman, and particularly around the time of the Mumbai riots in 92, etc. It is very important for a Muslim woman to approach a place where her religion is respected, her rights within Islam is respected, and then we move on to finding her space within the legal structure. So this was very important, and we are often asked this question: are you Muslim fundamentalist? Why have you named yourself Majlis? At every state, we are forced to say we have been asked to change our name. So within this structure, we have continued, and today the name Majlis is very well accepted. So nobody asked this question today because we are persistent. So that is the reason why we started an all-women organization which caters to minority women, to a poor women, to marginalized women, and give them the legal services of a well-paid lawyer, the similar kind of thing, not compromise in any way. And for that, one had to work very hard. So I had to finish my law, I had to finish my LLM, I had to write law books and make a name, write articles in the newspapers and make a name for myself, which the courts respect, with the judges respect, and where the husband and his lawyer feel intimidated. They cannot take us for granted. When you say a Majlis lawyer in the court, so that the person has dignity, respect in the court, and that passes on to our clients. So whatever we do with a case, our clients know that we are doing the best for them. Not every case is winnable, but there are many cases we win due to our legal strategy, due to legal planning, and a certain commitment with which we approach the subject. And this is continued, but it's been extremely challenging. Challenging in every aspect. Firstly, funding is the challenge. The name Majlis attracts additional scrutiny. And then we realize what it is to be a Muslim. We have just taken a name for the organization, and then we are subjected to so much scrutiny.
So you can imagine a Muslim identity that you're born into and what exactly a person goes through. And after the Bombay riots, in fact, our focus shifted very clearly towards secularism, to minority rights, and within which gender perspective and women's rights. And even including the debate on uniform civil code, including the debate on arbitrary triple talaq. Now, these have been very tricky issues for us to handle, but I think we have handled them very well, not sacrificing one against the other. Not saying minority rights is important, but gender is not important, or not saying gender is important, but religious identity is not important. I think for women, both is very, very important, and your legal strategy has to be structured within this broader framework of secularism, minority rights, and gender. So that's been a tightrope walk for us, and we do our best that this ideology is transmitted to the next generation and the next generation. The challenge here is, because it is a lucrative legal profession, there are a lot of young people come and join us, but when they are trained, they leave because they want to go to the mainstream lawyering. They do not want to be an NGO lawyer. So we're constantly training newer and newer lawyers, whereas experienced lawyers leave us. They carry our ideology, they carry the work, but they're not part of the organization. So in a way, we look at it as positive. There's a broad network of women who are trained by us today are practicing in the course, but also it doesn't strengthen the organization. Second is the funding constraint. All the time we face funding constraints. And second is the surveillance and scrutiny that one goes through. Fortunately for us, we also do a lot of police training. Police ask us to do the training for the newer enactments that come, etc. So with the Mumbai police, we have quite a close rapport, and we do a lot of police trainings. So when there is a scrutiny comes, inquiry, at least the local police know us and they explain our work. So far we have been managed to survive. We do not know how long we will survive, but so far we are here with extreme funding constraints. So we have sometimes had to change our model. Now we have more panel lawyers. We've started this sexual support to survivors of sexual violence. Many of them are young children, and we do the work of a support person, not lawyer. We go to the court and we are there with them till the end of the trial, and with very good results that we are able to get conviction in most of these cases that we intervene, and that's been our journey. Thank you. Since you do have a couple of minutes, I do have a follow-up question for you that is more general. Majlis has been like sort of a pioneer in the legal aid and legal intervention, I would call it, more than aid sector. But I'm sure that there are many younger women also who must have come up to you over the years and wanted to enter the same field, not as employees, but also as people who want to start in the NGO sector. So hypothetically, tomorrow, if a bunch of women, young women of my age or even older, came to you and said that, look, we want to set up an NGO in this legal sector for women or any other sector for women, what would be the one thing you would tell them to keep in mind, and the things to, be wary of, or things to not do, like good practices and bad practices, sort of? Just in a couple of minutes, if you can answer. Yeah, I think the important thing is to know what is this NGO structure, what is your trust registration, what does it say, what are your aims and objectives, etc. I think you can survive only if you have a passion to work. Because many times you feel like withdrawing. You feel that I don't want to be here. This is too tiring and this is too difficult. But unless there is a very, very deep passion that you're not coming here to make a name for yourself, you're not coming here to get fame for yourself. You are here because you have a certain passion, because of which you take up issues, because of which when you're successful, the recognition comes automatically. You don't have to chase it. You don't have to pursue it. It is on your dedication and commitment to the work that is involved that is important. Secondly, you cannot say, I am doing good work, so I don't have to follow rules. And many NGOs have got into trouble because of that, because you are filing your returns, filing your reports, and now there is more and more regulations and requirements. And there are funding requirements, there are state requirements, there are trust requirements. You have to follow each of them, and you have to strengthen your core structure, your administrative structure, where your accountant is very diligent and they're following all the rules
your funders requirements are met. Otherwise, you will not be able to survive. And we learned the hard way. I was not a trained person. I learned on the job, and then the later people, in fact, took it over. And I didn't have any exposure either to social work or trust management or any of these things. But along the way, you realize the way other people are losing their FCRA registration, they're not getting fundings, they're forced to close down. So in that, to survive, it requires a very methodical approach, understanding the rules and regulations of the state, of the central government, of the funding agencies, everything. And that becomes a very important part of your functioning. I cannot say I'm doing good work. I'm a good lawyer. I can help many women. That's not enough in these days. You have to be very scientific. You have to be very methodical, whichever area you're working on. That is very core component of working in an NGO or setting up an NGO. Okay, thank you so much. Coming to our next speaker, Rubina Nafis Fatima, who is the founder director of SAFA, and is a social entrepreneur and a social worker and a fellow at the Aspire Leadership Circle India. So SAFA works on the issues of livelihood and education, and that is what I would like to start with you, in the sense that so far Flavia Agnes has pointed out some of the major issues of finances, of training and retraining people who might not want to continue in the NGO sector. But speaking particularly of education, since SAFA works on education, we are working or surviving in a time where education is highly commercialized. It is highly exclusionary in one sense. It is barely accessible to most people. And the recent, I think I'm assuming many of you would have seen the recent National Assessment Survey, where it has shown that post-COVID there has been a real fall in learning outcomes in classrooms. Teachers are reporting back from classrooms. All those things are there. So in a time where policies, macro, large-scale policies are radically changing, how education or the public education sector works in India, how can NGOs intervene particularly, and how has SAFA intervened in the education sector so far? So, and also if you would want to comment on the interesting point that the previous speaker brought up about how it's the aspect of keeping people in the NGO. When many people join, but they often leave, like the question of a kind of stability within such an organization. So if you could address these two questions in the context of education and your own enterprise. Assalamualaikum, and thank you, Shama and Flavia, for putting in points and giving a wider perspective. So you asked me to talk about education. तो education पे हम लोग तकरीबन सफा का दो core हमारे verticals हैं. एक है livelihoods, women livelihoods and youth livelihoods, और education. तो काम हम लोग चालू किए थे तकरीबन 14 साल पहले. पर क्योंकि जैसे फ्लाविया ने कहा कि अभी कोई पैशन से स्टार्ट करता है, तो मेरी जर्नी भी वैसी रही है कि पैशन से स्टार्ट किया है कि काम करना है, अच्छा काम करना है, पर वो अच्छा काम जाकर कहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ पर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं, तो सारे चीज़ों से जूझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो एजुकेशन का अगर अभी मैं डोमेन लूँ कि करंट सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम्स, especially in the Telangana region. So, I mean, everybody knows that it has suffered a huge lag. What I find in our work, what we did in the past 5 years on education, has been to strengthen the government schools which are within the areas where we are working. So, though we started with affordable private schools का education हम लोग pick करके start किए थे काम हमारा, but soon we realized कि affordable private schools is not the answer, क्योंकि looking at the population size, मतलब हर घर में आप देखिए कि 5 से 6, खासतौर से क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही below poverty line families के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा ये analysis था कि हर घर में 5 बच्चों की तालीम जो कि बिल्कुल below poverty line family है, ये it's going to be next to impossible for the family to maintain.
So what is the option over here? What people used to do, जो हम लोग slums में काम कर रहे थे, तकरीबन 140 slums में हम लोग हैदराबाद में फिल वक्त काम कर रहे हैं, तो हम लोग को जो नजर आया कि यहाँ पर लड़कियों का एजुकेशन सफर करता है. You know that gender biases come in. If there are 4 girls in the family, you will not believe the elder girl is sent to a government school, the second girl is sent to a government school. सबसे छोटा अगर लड़का है तो वो लड़के को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे और लड़के को भेजेंगे ऑटो से और लड़कियां जाएंगी पैदल स्कूल को. और जब 9th-10th में लड़कियां पहुंचती हैं उनको ड्रॉप आउट करते हैं. I mean, this everybody knows the context of education in India, especially in families which are economically backward. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि we were very fortunate, हम लोग काफी लकी थे कि हम लोग को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करने का. तो पहले तो हम लोगों ने जो पिक किए तकरीबन 90 गवर्नमेंट स्कूल्स पिक किए हम लोगों ने हैदराबाद में इलाकों में, विच अगेन काफी पिछड़े हुए इलाके जहाँ पर कभी कोई एनजीओ इंटरवेंशन भी नहीं हुआ था. गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम किया हमने एज पर राइट टू एजुकेशन देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टूडेंट SMCs करके, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कमिटीज विच आर देयर, which are supposed to be there as per RTE, but schools में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ पेपर पर. तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो SMCs है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज जो है, इनको रिवाइव किया हम लोगों ने. किस तरीके से रिवाइव किया, हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशंस लिए. काफी बड़ा प्रोजेक्ट था ये हम लोग तो एक हिस्सा थे उसका. और 90 स्कूल्स में हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से परमिशन लिया कि यहाँ पर हमको इंटरवेंशन डालना है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में. तो द प्रिंसिपल वाज ओपन. स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में ज्यादातर औरतें हैं जो मदर्स रहती हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. अगर आप देखें तो पता नहीं कौन से ब्यूरोक्रेट ने बनाया है, बट द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. ओनली थिंग, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, अगर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो जाए उसका तो बहुत ही खूबसूरत है. पर यहाँ पर हम लोगों ने इंटरवेंशन किया SMC के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ एंड लोकल बॉडीज जो 1 को या 2 को होना पड़ता है कोऑप्टेड मेंबर्स को, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग की हम लोगों ने. तो वहां से क्या हुआ कि पेरेंट्स की ओनरशिप चालू हुई एजुकेशन की. सो दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज दैट वी हैव वर्कड ऑन. तो एजुकेशन, व्हाट आई फील इज वी नीड टू बी प्रमोटिंग गवर्नमेंट स्कूल्स because even they are looking for support instead of setting up parallel structures. और ज्यादातर हमारे मुस्लिम इलाकों में ये है कि कोई ना कोई philanthropist आते हैं और बोलते हैं मैं स्कूल चालू करूंगा. I do not think that is the answer. It is not a sustainable way of working at all. क्योंकि looking at the population, looking at the need of the community, it's huge. And sustainable work, मतलब सारे affordable private schools आप देखिए 2 साल में पिछले बंद हो गए. गवर्नमेंट स्कूल तो वहीं का वहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहां पे. Yes, there are काफी डायलॉग होते हैं कि टीचर्स आती नहीं है वगैरह, पर we have worked with them, we have seen good government schools functioning also. So I think our community, this will be my advice, मेरी strict opinion ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को NGOs अगर सपोर्ट करें या philanthropists सपोर्ट करें, मतलब छोटी छोटी नीड्स हैं उनकी, पीने का पानी लगा दें वहां पे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रेंथन करें. वो लोग खुद फंड्स रेज करते हैं कम्युनिटी से, वॉशरूम्स को ठीक करने के लिए, बाउंड्री वॉल लगाने के लिए, गेट लगाने के लिए, क्लासरूम में बेंचेस डालने, ब्लैक बोर्ड डालने. तो गवर्नमेंट स्कूल्स को मेरे हिसाब से इन द कमिंग डेज वी नीड टू बी प्रमोटिंग, वी नीड टू बी सपोर्टिंग. दैट हैज बीन आवर एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड दैट्स माय वन पीस ऑफ एडवाइस. with regard to girls not coming up to 10th पर पहुंचते नहीं है, वो तो फिर पता नहीं, it's a part of the structural system, they call it structural violence, which is मुस्लिम इलाकों में अगर आप देखें तो हाई स्कूल्स कम है, प्राइमरी स्कूल ज्यादा मिलेंगे. क्यों कम है भाई हाई स्कूल्स? What is the reason? A girl has to travel like 6 kilometers to reach a high school. And then she drops out. The moment she reaches 9th, 10th, she drops out because it's too far. The family cannot afford the conveyance. So we need to be putting up. And I think as per RTE, there's supposed to be schools at every 1.5 or 2 kilometers or something like that. There is a mandate over there. We need to be looking at such things. And putting in petitions, work on that. I'm not saying कि सबके सब activism से हर चीज सूझी जाती है, पर कहीं पर तो हमको वो knowledge gain करना है
as a community, as people, responsible people from the Muslim community, we need to be working on things like that. और ज्यादातर मैं मुसलमानों के तकरीबन मेरे को बहुत नाराजगी है कि पैरेलल स्ट्रक्चर हम लोग स्कूल सेटअप कर देते हैं बस्तियों में, और ना तो वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स होती हैं, 10th पास लड़कियां पढ़ा रही हैं वहाँ पे, इंटरमीडिएट फेल लड़कियां, +2 फेल लड़कियां पढ़ा रही हैं हमारी मुस्लिम बस्तियों में स्टूडेंट्स को। तो आगे का हमारा जनरेशन क्या हुआ? What are they going to be? What is the future of the community? I really, for me, that was extremely worrying points for me. Coming on to the next part, which Flavia spoke about, attrition of people staying with you. I think that was the thing that she raised. Yeah. What kind of people stay with you? So if you see in our organization, we have about 76 full-time employees engaged with us right now. अब इसमें जो हमने देखा है कि unless an NGO as an organization, unless we have a structure which is actually looking at the growth of the employee, what are we doing about the growth of the employee? क्यों ठहरेंगे हमारे साथ कोई भी है? हमारे साथ बंदे ठहरेंगे जब हम उनको सैलरी बराबर देंगे, which is in line with what is existing in the world. Number two, if they see some growth and some future with us. These are two things which are, मतलब ये तो सामने जो फिजिकल आपको नजर आते हैं, तो ये तो हमको जहन में रख के चलना ही चलना है आगे, कि हम लोग इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके हम लोग दे हमारे टीम्स को कि उनकी ग्रोथ हो वहां पे, then they will stay with you. Number two, what I feel is the attitude of the leadership. The leadership is extremely important over here. What is the leadership doing about it? What is the connection of the leadership? When I say leadership, it could be the CEO, it could be the COO, it could be one of the directors. So values of the organization need to be strengthened over here. तो values कुछ कोई ना कोई core values रहते हैं, सफा के भी हैं, I'm sure मजलिस के भी हैं. Core values आपके कितने अहम हैं आपके लिए organization में, उस पर काम regularly करना चाहिए. अब मैं जैसे I'll give you a small example. हम लोग हमारे staff meetings, review meetings organize करते हैं. I start with the mission of the organization. Even our board meetings. ये कहीं पर सीखा था मैंने बहुत साल पहले कि मीटिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप विजन से स्टार्ट करिए, मिशन से स्टार्ट करिए और कोर वैल्यूज. तो ये हम लोग एक प्रैक्टिस बना लेते हैं ताकि लोगों के रगों में वही वैल्यूज रहें और वही मतलब जो एक विजन है ऑर्गेनाइजेशन का. तो that needs to go down to the last community outreach worker. तो unless that part, leadership का रोल नहीं वो है. leadership का रोल क्या है? हमारा रोल प्रोग्राम्स चलाना, प्रोग्राम मैनेजमेंट नहीं है. हमारा रोल ये है कि हम हमारे वैल्यूज लास्ट बंदा जो आउटरीच वर्कर है, फील्ड वर्कर है हमारा, उस तक हम वैल्यूज पहुंचाएं हमारे. And the vision of the founder extremely important. If you see in corporates and all, Shaima, if you see in corporates, आप Microsoft के ऑफिस जाइए, आप Google के ऑफिस जाइए, वहां पर लगा हुआ है विजन. तो क्या हमने वो कोशिश की है वो विजन दिखाने की? सिर्फ लगाना काफी नहीं है, हमको दिखाना भी है विजन वो लोगों को, ताकि उनको एहसास हो कि भाई ये हम एक ख्वाब का हिस्सा हैं, बड़े ख्वाब का हम हिस्सा हैं. शुक्रिया. दो तीन काफी अच्छे पॉइंट आए मुझे लगता है. एक तो ये बात आई कि मतलब जो विजन वाली बात है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी इन दिस पैनल वुड एग्री कि unless you have a long term plan, unless you have a vision, unless you remind yourself कि आप मतलब आप in the first place why did you start this work, then it is on the days that it gets difficult, then you will feel very dispirited unless you remember that. Coming to the next speaker, पंकति जोग, डॉक्टर पंकति जोग, उनको 4 बजे जाना है तो हम उनको यहाँ पर पहले बुला लेते हैं. डॉक्टर पंकति जोग is executive secretary माहिती अधिकार गुजरात पहल, which works in the field of transparency. और उन्होंने एक बहुत important उनका एक contribution ये रहा है कि वो इंडिया के first लीगल RTI हेल्पलाइन लॉन्च किया था उन्होंने 2006 में. और तो कुछ पॉइंट्स अभी तक आए हैं डॉक्टर पंकति, आपने भी नोट किया होगा, और उसी पॉइंट से मैं ये आगे कंटिन्यू करते हुए ये पूछना चाहती हूँ, 2 कनेक्टेड चीजें पूछना चाहती हूँ. अभी रुबीना जी ने भी ये बात की कि अलग अलग सेक्टर्स के इंटरेक्शन होते हैं. मतलब NGO का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ
NGO सेक्टर में काम करें, आप लीगल उनके साथ काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, आप सिटीजन अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हैं, और खासकर क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकग्राउंड है वो RTIs और ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, विच इटसेल्फ इज उसका एक अपना बहुत एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, लीगल हिस्ट्री रहा है। तो NGOs के लिए, और खासकर ऐसे NGOs के लिए, बाकी सेक्टर्स, बाकी ग्रुप्स, बाकी एक्टर्स के साथ इंगेजमेंट कितना जरूरी है। मतलब जैसे RTI एक ऐसी चीज है जिससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है, मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी हम मांगते हैं एज सिटीजंस, दैट वाज द होल पुश ऑफ द RTI। तो NGOs के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम करना और बाकी सिविल सोसाइटी के साथ काम करना, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम करना कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है और कितना बेनिफिशियल है। तो ये मेरा मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ये कनेक्टेड सवाल यही है कि RTIs कई बार मतलब जब शुरू में जब RTI का सिस्टम आया था तो एक बहुत ऐसे दिखाया गया था कि बहुत सिंपल, बहुत इनोसेंट चीज है, आप RTI फाइल करें और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि RTI पूछने वाले, सवाल करने वाले बहुत सर्वेलेंस और बहुत सेंसरशिप के अंडर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में भी हैं क्योंकि वो RTI एक्टिविस्ट रहे हैं। तो आप ये दोनों सवालों को थोड़ा आंसर कीजिए कि एक तो मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ये है कि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन, और दूसरा क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता है। अनम्यूट कर लीजिए पंकज जी। थैंक यू शर्मा जी। और पहले दो स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात को रखा है। मैं ख्याल रखूंगी कि उसमें कुछ रिपीट ना हो। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि जैसे बीना जी भी कह रही थी कि हम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो जिस तरीके से है उसमें ये ऑब्वियस है, और नॉट ओनली ऑब्वियस, इट्स काइंड ऑफ लाइक कंपल्शन कि हम लोग इतना इंटरेक्ट अलग अलग और स्टेक होल्डर्स से करें, उतना हमारा इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा कामों में, अदरवाइज वो अलूफनेस हो जाएगा। सो व्हेन आई सी, स्पेशली मैं अगर RTI हेल्पलाइन से बात देखती हूँ कि हमारे वहाँ जो कॉल्स आते हैं वो बहुत कम सोशल सेक्टर से होते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो आम सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से होते हैं, और वो लोग राइट टू इंफॉर्मेशन कानून का इस्तेमाल अपनी पर्सनल चीजों से लेके अपने काम या अपने जो भी और मसले हैं उनके लाइवलीहुड को लेके या उनके व्यापार को लेके उससे रिलेटेड करते रहते हैं। तो हर एक मसला ऐसा होता है वो कहीं ना कहीं कोई शायद करप्शन से रिलेटेड हो या सीधी सीधी कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। Not only about talking about governance or transparency and accountability, when we all in this sector are basically here to make a change. हम लोग कहीं ना कहीं इसलिए आए हैं क्योंकि हम डिफरेंस करना चाहते हैं। तो अगर वो हम डिफरेंस करना चाहते हैं, वो डिफरेंस हम हमारी आयु होते हुए देखना चाहते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि हम लोगों को ये हमारा इम्पैक्ट, हमारा स्ट्रैटेजी और हमारा स्पीड तीनों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम वॉलंटरी पूरे सेक्टर को देखते हैं पिछले 60-70 साल में देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सबसे आपको दिखेंगे कि तो सालों से काम कर रहे हैं, एक एरिया में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं। जैसे ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं 25, 30, 35, 40 साल से काम कर रहे हैं। तो वो जो उनके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स या इम्पैक्ट्स रहते हैं उसके साथ साथ बहुत सारा एनवायरनमेंट बाहर का बहुत चेंज हुआ है। वी वर एट 20 km/h speed and today we are at 120 km speed. सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, वॉलंटरी सेक्टर का खुद का एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ है। वॉलंटरी सेक्टर हैज गॉन मोर प्रोफेशनल देन ओनली अ सर्विस सेक्टर, लाइक जो सेवा का क्षेत्र, वो सेवा करने के क्षेत्र से वो काफी प्रोफेशनल इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस में आया है। जो डोनर्स हमें सपोर्ट करते हैं वो भी उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि आपका इम्पैक्ट कितने में और कैसा रहा है और वो इम्पैक्ट कितना सस्टेनेबल रहा है। तो हम ज्यादातर वंचित लोगों के साथ काम करते हैं। वो वंचित जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होते हैं वो अपने आप में आइसोलेटेड होते हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में भी अगर जो बहनों के साथ काम करते हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से क्लास या क्रीड से बिलोंग करते हैं, दे देमसेल्व्स आर मार्जिनलाइज्ड राइट फ्रॉम देयर हाउस होल्ड। तो इस तरीके से जो ऑलरेडी आइसोलेटेड
सिचुएशन में है उनके इश्यूज के ऊपर अगर हमारा अप्रोच हम ओपन नहीं रखेंगे तो इम्पैक्ट में बहुत असर करता है। तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी जो रहती है वो ये, हम लोग आरटीआई के साथ साथ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल ऑडिट्स इन पब्लिक प्रोग्राम पे भी काम करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहती है वो ये रहती है कि इससे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है उसको आइडेंटिफाई करो। शुरुआत में शायद अगर हम इमोशनली देखें उसको तो ऐसे लगेगा कि अरे ये तो शोषक है, इसको हम कैसे स्टेक होल्डर मान सकते हैं, बट नहीं, हम लोग नॉमेडिक कम्युनिटी के साथ काम करते हैं पब्लिक प्रोग्राम्स के ऑडिट के संदर्भ में। तब नॉमेडिक कम्युनिटी जो नमक बनाती है गुजरात में, उनका सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो वो व्यापारी लोगों से होता है। और लेकिन जब हम उनके बदलाव की प्रक्रिया के लिए बात करेंगे तब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एज अ ट्रेडर कम्युनिटी, हम उनके साथ अगर नहीं बैठेंगे तो वो आगे वो जो पूरा सोल्यूशन होगा वो विद इन कम्युनिटी पूरा आके सस्टेन, वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा जो अपोजिट साइड से आने वाला है। और वो प्रोजेक्ट के तक बिल्कुल दिखेगा, लोग आएंगे, लोग बात करेंगे, लोग हाथ भी उठाएंगे, लोग नारा भी लगाएंगे, लेकिन जैसे वो 3 साल का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वो नारा वो याद नहीं रखेंगे। तो सस्टेन जो एफर्ट्स आएगा वो बदलाव दूसरी तरफ भी आना चाहिए, जो शोषण करते हैं या वो शोषण का एक मूक प्रेक्षक बन के सरकार देख रही है या अदर समाज देख रहा है, वहां भी अगर हम झंझोड़े नहीं, हिलाए नहीं तो वो अपना प्रॉब्लम ही बन जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली हम जो सोशल सेक्टर में हैं, हम जो बहनों के साथ काम करते हैं, बहनों के मुद्दों के साथ काम करते हैं, सबके हमारे सभी प्रॉब्लम जो हमारे कंधों के ऊपर ही आ गए हैं। और वो लार्जर सोसाइटी का सवाल नहीं बन रहा है, वो गवर्नमेंट का सवाल नहीं बन रहा है, वो अदर स्टेक होल्डर्स का सवाल नहीं बन रहा है, वो मीडिया का कंसर्न नहीं बन रहा है। तो ये एक की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है हमें लगनी चाहिए। वो हमारा इम्पैक्ट के लिए हमने ये नॉमेडिक कम्युनिटीज में शुरुआत किया था, लगभग 15 साल लगे, लेकिन आज वो नॉमेडिक कम्युनिटी का जो सवाल है वो हमारा सवाल नहीं रहा है अकेले, या शायद कल हमारा काम बंद हो जाए तो भी देयर आर 10 अदर पीपल हु आर वर्किंग इंक्लूडिंग विद इन द कम्युनिटी एंड इंक्लूडिंग फ्रॉम अदर सेक्टर्स। और हम गवर्नमेंट के और अदर स्टेक होल्डर्स में से जो अच्छे लोग थे, हमें एक चीज कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये मैं वर्सेस वो नहीं होता है कभी भी। ये गवर्नमेंट में कभी पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट है या एंटी पुअर हैं, या जो कम्युनिटी एज अ लार्ज है या सोसाइटी एज अ लार्ज है उसमें किसी को कंसर्न नहीं है, ऐसा हम क्यों समझे। उसी कम्युनिटी में से, उसी गवर्नमेंट में से, उसी सिस्टम में से, उसी मीडिया में से हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमारी तरह ही सोचते हैं। हम तो सिर्फ सेक्टर में हैं लेकिन वो वहां रहते हुए भी सोचते हैं। हम लोगों को उनको ढूंढना है, हम लोगों को उनको हमारे साथी बनाने हैं, वो हर एक सेक्टर में अगर हम वो बना पाए तो बहुत असर करेगा। और इसमें हमारा कम्युनिकेशन, हमारा अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हुए मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल, मतलब मैं थोड़ा सा आपका ये जो टॉपिक था उसके पहले थोड़ा सोच रही थी कि क्या चैलेंजेस है। इट्स रियली बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग इवन विद इन द सेक्टर। इफ यू सी वुमन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ वुमन लैड ऑर्गेनाइजेशन और वुमन एन एनजीओ, हमें थोड़ा सा ये गौर करना पड़ेगा कि कितने वुमन एक्चुअली डिसीजन मेकिंग की ताकत रखते हैं। आज एनजीओ सेक्टर में वुमन बहुत बड़ा फोर्स है लेकिन वो फील्ड वर्कर्स हैं। क्या डिसीजन मेकिंग में, क्या डायरेक्टरशिप में, क्या ट्रस्टीशिप में, क्या प्रोग्राम के ऑफिसर्स में कितनी बहनें हैं आज सभी सेक्टर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, वुमन जब हम देखते हैं वो एक चेंज मेकर है। क्या उसकी, जो रुबीना ने भी जी कहा कि उसकी सेफ्टी, उसको अपॉर्चुनिटी, उसको आगे बढ़ने की, सोचने की, उसकी खुद की एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है। व्हेन आई से सेफ्टी, इट्स नॉट ओनली सेफ्टी इन काइंड ऑफ लाइक जेंडर के कॉन्टेक्स्ट पे, ये भी रहता है कि उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी कितनी है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन में आज लेबर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरी छुट्टियां मिलती है विद सैलरी। कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पैरेंटल हम लीव देते हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बच्चा छोटा हो तो वो लेके आ सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट करता है या वहां पर बच्चे के रखने के लिए होता है। सो देयर आर मेनी अदर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज व्हेन वी सी the lady or the woman in the organization, even that organization is working on women's issues. अगर बाद में आता है कि अगर हम वुमेन्स के इश्यूज पे काम नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारी आरटीआई हेल्पलाइन है, हम सिर्फ बहनों के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम बड़े मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं, हम सभी मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो वो जो मुद्दे हैं वो हमेशा थ्रेटनिंग मुद्दे होते हैं। कहीं ना कहीं किसी को थ्रेट लगती है, आप जब आरटीआई करते हो तब वो एज अ विसल ब्लोअर आपके ऊपर एक थ्रेट है, एज अ वुमन आपके ऊपर और एक थ्रेट होती है।
तो ये हम खुद से एक्सपीरियंस से भी हम कहते हैं कि जब हम क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं विद इन द सेक्टर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, जब हम ऐसे क्रुशियल सवाल करेंगे जिनके जवाब शायद ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देना पसंद नहीं होगा या वो पसंद नहीं करेंगे, तब हमारे ऊपर उंगलियां अलग तरीके से उठेंगी। और ये हमेशा मुझे लगता था शायद हमारी सेक्टर में नहीं है, क्योंकि मैं इस सेक्टर में 20 साल से हूँ, मैं 2001 से यहाँ जुड़ी, मैं गोवा से हूँ अदरवाइज। लेकिन मुझे ये पता चला कि जैसे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये करने की कोशिश रहती है, या एज अ वुमन कहीं पे आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और टैग होती है, उतना ही सोशल सेक्टर में भी अनफॉर्चुनेटली होता है। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग ऑन द चैलेंज साइड, बट लास्ट नॉट द लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वुमन जब क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाती है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, तब उसको एज अ विसल ब्लोअर, एज अ सिटीजन स्टेट कितना रिस्पॉन्ड करती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि जो आरटीआई हेल्पलाइन मतलब आरटीआई करने वाले लोग हों या सोशल एक्टिविस्ट जो बहुत ही क्रुशियल मुद्दों के ऊपर, जैसे सिंगल वुमन के मुद्दे हों, विडोज के अधिकारों के मुद्दे हो, विडो लेडी को जिस तरीके से सोशल कस्टम्स में डाला जाता है, तब रिलीजियस लीडर्स भी अगेंस्ट जाते हैं, सो कॉल्ड हमारे एस्टेब्लिश सोसाइटी के लीडर्स होते हैं वो भी अगेंस्ट जाते हैं, और काफी हद तक हम लोगों को सिस्टम पुलिस से भी ऑपरेशन नहीं मिलता है। तो वुमेन के जैसे वुमेन एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, वुमेन के मुद्दे भी होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है। अगर आप सेक्स वर्कर्स के क्रुशियल मुद्दों पे काम कर रहे हो, आप सिंगल वुमेन के क्रुशियल मुद्दों पे काम कर रहे हो, आपके चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और अगर आप नरेगा या आरटीआई या गवर्नेंस या माइनिंग सेक्टर को लेके काम कर रहे हो जिसमें बहुत क्रुशियल सवाल आते हैं, उसमें वो चैलेंजेस 10 गुना और बढ़ सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट टू फॉर एनी सोशल एक्टिविस्ट इज टू ऑलवेज बी विजिल, keep yourself updated in the all sense, like when you are in leading position in your organization, you have to have a knowledge of all the updated laws and that are binding to you. कोई वहां पर बहनों का ऑर्गेनाइजेशन है करके छूटछाट नहीं देने वाला, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आपके अकाउंट्स, वाउचर्स, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉम्प्लायंसेस। एट द सेम टाइम आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पर भी आपको विजिल रहना पड़ेगा। आप कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, अपने आप को अपडेटेड और कॉम्पिटेंट रखना पड़ेगा, तभी हम इसमें कर सकते हैं। लास्ट में हमारे सेक्टर में तो एक चीज आई है जो मुझे हमेशा खटकती है पर्सनल लेवल पे। हमारे सेक्टर में बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो MSW या प्रोफेशनल सीख के आई हैं, और कहीं ना कहीं हमारा सेक्टर, इवन वुमेन NGOs भी ये डिफरेंशिएट करना शुरू किए हैं। द बहनें जिनको इंग्लिश आता है, जिनको प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना आता है, जिनको डॉक्यूमेंटेशन आता है, जिनको प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स कहते हैं, और वो बहनें जो फील्ड में काम करती हैं, जिनको पक्का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन पता है, क्या करना पता है, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी नहीं आती। अगर हम इस तरीके से डिफरेंस करना शुरू करेंगे तो वो नहीं चलेगा। आई थिंक आई एम डन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आए। कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, यही आपने जो अभी तक जो हम बात नहीं कर पाए थे कुछ एस्पेक्ट्स में, मैंने भी वो सवाल नहीं किया, वो आप बहुत अच्छा हुआ कि आपने वो पॉइंट लाया कि इंटरनली एक व्हाट इज लाइफ लाइक फॉर अ वुमन इन द NGO सेक्टर, व्हाट इज लाइफ लाइक फॉर वुमन इन अ वुमन NGO आल्सो। तो ये तबस्सुम नाज जी क्या कॉल में है? मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा है, अगर है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अगले स्पीकर हैं। शायद नहीं है। अगर है तो आप इस स्पीकर के बाद ज्वाइन हो सकते हैं। आरिफा जी प्लीज जरा फॉलो कीजिए कि तबस्सुम नाज जी है या नहीं कॉल पे, तब तक हम अगले है ना आई थिंक शी इज देयर। जी शुक्रिया। अच्छा, वो नाम अलग था। तो कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स है। ये भी अच्छी बात है कि द आइडिया ऑफ नॉट जस्ट रिफॉर्मिंग द ऑप्रेसर, जो शोषण करता है, जो ऑप्रेस करता है, उसको हम उसको NGO सेक्टर या NGOs कैसे चेंज करें, एंड ऑल्सो हाउ टू मेक द सोसाइटी certain issues that are seen as specific issues, how to make them issues of the larger society itself. तो हमारे अगले स्पीकर पे आते हैं जो है तबस्सुम नाज जी। तबस्सुम नाज अध्यक्ष हैं जन कल्याण शिक्षण प्रतिक्षण समिति के पीलीभीत में, एंड इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो संगठन है, वो विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और सेफ्टी पे काम करता है। तो तबस्सुम नाज जी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं जो
अभी जो लास्ट स्पीकर ने भी बोला कि जो एनजीओ स्पेस है, सेक्टर है, उसमें भी हायरार्की, उसमें भी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं और एक वुमन के। और आप पीलीभीत में काम करते हैं, तो आपको मतलब आप ग्राउंड से बहुत लगे हुए हैं, आपको एग्जैक्टली वहां पर क्या इश्यूज हैं वो आपको मालूम होंगे। तो पहला मेरा सवाल ये है कि विमेन सेफ्टी और विमेन एम्पावरमेंट, ये ऐसे टर्म्स हैं जो काफी यूज किए जाते हैं और खासकर एनजीओ सेक्टर में। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पीलीभीत से, आपके एनजीओ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, कि औरतों के अलग अलग तरह के औरतों के अलग अलग बैकग्राउंड से या अलग अलग कम्युनिटी से जो आते हैं, उनका विमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी, ये दो चीजों का क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या एक्सपेक्टेशन है? वो एनजीओ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और कहाँ, किस हद तक, किस पॉइंट तक क्या एनजीओ इन एक्सपेक्टेशंस को या इन उम्मीदों को फुलफिल कर पाए? तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। जी, 2011 से मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही थी। मेरे पास अलग अलग 150-200 गांव थे। तो वहाँ गांवों में वुमेन्स एक तो निकलती ही नहीं थी, दूसरा ये कि उनका बैंक अकाउंट खुलवाना होता था, तो उसमें भी उनको जाने में दिक्कत होती थी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाया है, तो उसमें उनको पदाधिकारी वगैरह बनाना होता था, लेकिन फिर भी उनके घर वाले मना करते थे कि वो नहीं जाएंगी। बहुत दिक्कतें होती थी। और खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई लिखाई के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना और शिक्षा के लिए रोकना। फिर मैंने प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ा और उसके बाद BA MA किया। काफी संघर्ष अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन जब मैं फील्ड में निकली और मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उन लोगों को भी शिक्षित किया, तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन उस 10 साल के बाद आज भी जब मैं कभी फील्ड में जाती हूँ, है फर्क बहुत है पहले से, लेकिन उतना ज्यादा कुछ खास नहीं। तो आपका कहना ये भी बात अभी तक आई है कि बहुत सारी चीजें इम्प्रूव अगर हुई भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी हुई है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो लंबे अरसे तक चलते ही रहते हैं, जैसे विमेन सेफ्टी है या विमेन एम्पावरमेंट है। तो पीलीभीत के लोकल रियलिटीज क्या है? मतलब आपका वहां पर आपको क्यों लगता है कि ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं और वो सुधर नहीं रही, जबकि एनजीओज और बाकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वहां पर? NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन तक पहुंचने में पूरा सफल होता है या जाता है। क्योंकि जब हम जाते थे, हमने बहुत सारी योजनाएं सरकार की ही देखी, जैसे कि DRDA भी बनाता है समूह, हमने तो नाबार्ड की योजना के तहत बनाए, रूडा के तहत बनाए, एनजीओ को प्रोजेक्ट लेकर के बनाए, लेकिन उन तक उनको या तो लालच दे के काम किया जाता है, मेन मकसद के लिए काम नहीं किया जाता। माना किसी ने प्रोजेक्ट लिया, वो उसको बस अपने उसके लिए काम करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हमारा जो एम है वो हमें लोगों को फायदा पहुंचाना, उनको जागरूक करना। अगर यही एम हो जाए तो मुझे लगता है कि कोई इससे नहीं बचेगा। लेकिन लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो वही वजह है कि वहाँ के सारे लोग जागरूक नहीं हो पाते। तो जैसे रुबीना जी ने भी बोला और कुछ और स्पीकर ने भी ये बात आई कि मतलब प्रोजेक्ट्स शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म फॉलो अप नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे एक बात ये भी आई थी, कई बार ऐसे होता है कि लोग बड़े शहरों से आते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल स्टार्ट कर देंगे या यहाँ पर सुइंग मशीन सेंटर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसका कोई लंबा विजन नहीं होता है। तो क्या आप जिस एनजीओ में काम करती हैं, जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप प्रोजेक्ट्स को और इन चीजों को मतलब एक लंबे विजन के साथ और एक कमिटमेंट के साथ करने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा ये था कि मैंने प्रोजेक्ट बिना लिए ही काम शुरू किया था। मैं खुद अपने ही उससे सिलाई उन लोगों को सिखा करके, गाँव में मैं पैदल जाती थी 5-6 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरा एम यही था कि उन लोगों को मैं सिखा दूं जो कमजोर हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हैं, जो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रही हैं, जो घर से बिल्कुल निकल ही नहीं रही हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरा भी बैंक अकाउंट होगा तो मैं मजबूत हो सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने खुद शुरू किया। उसके बाद में मैं नाबार्ड से जुड़ी,
जब मुझे लगा कि इन लोगों को और फायदा पहुंचाना चाहिए, मैं अपने आप से अकेले से इतना ज्यादा नहीं कर सकती, तब मैंने नाबार्ड से प्रोजेक्ट लिया 2011 में। तब मैंने इनको नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए उन लोगों को, और MEDP और RDP इस तरीके से इनको 13-13 दिन की ट्रेनिंग दी, किसी को खाद बनाने की और सॉफ्ट राइस बनाने की, सिलाई कढ़ाई, बैग मेकिंग, जो कि ये मैं खुद ही जानती थी, मैं खुद ही उनको ट्रेनिंग दिया करती थी। उसके बाद ट्रेनिंग से जोड़ के उन लोगों को रोजगार एक उनको गांव में उपलब्ध हो गया। उन लोगों ने अपने गांव का बैंक कभी नहीं देखा था, जो कि हम उनके हस्बैंड को मोटिवेट करते थे कि जाने दीजिए, बैंक अकाउंट है, आपको इस तरीके से फायदा होगा, तब वो जाने देते थे। जब फायदे की बात आती थी तब वो लोग घूंघट में ही बैंक जाती, उनका बैंक अकाउंट खुलवाते, तब उनको थोड़ा लगा। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी भी चल रहे हैं, काफी लोग सक्सेस हुए, उनको बैंक से लोन भी मिला और उनकी सेविंग भी हुई काफी अच्छे से, मतलब उन्होंने किया। कई गांव तो ऐसे थे जहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं थे, तो हमारे मोटिवेट करने से उन लोगों में इतना मतलब जागरूकता आई कि उन लोगों ने टॉयलेट वगैरह भी बनवाए। आप अब मेरे पीलीभीत से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जो भी गाँव है, अब मैं वहां जाके देखती हूँ 8-10 साल के बाद कि हर घर में टॉयलेट है। एक तो डूडा की स्कीम के तहत हुआ, लेकिन कुछ लोग खुद जागरूक हुए, उन्हें लगा कि बहू बेटियां ऐसे ना जाए, तो उन्होंने टॉयलेट बनवाए। और अब जिन लोगों को मैंने सिलाई सिखाई, अब मैं जाके वहां देखती हूँ वो लोग खुद में सेल्फ हैं, पूरे गांव की सिलाई कर रही हैं, तो अच्छा लगता है ये देखते हुए। और इसी उस पे दैनिक जागरण ने खबर भी निकाली पिछले साल के आधी आबादी की तबस्सुम, क्योंकि आबादी को मैंने मतलब निस्वार्थ ही उन्हें जागरूक किया और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, ताकि ये जागरूक हों, कुछ करें और ये लोग आगे आए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बुटीक खोले और बहुत सारे लोगों ने पार्लर खोले, जो जो ट्रेनिंग दी उन्होंने खुद से भी वो आगे आई और वो कुछ कर भी रही हैं। जी शुक्रिया। तो हमारे अगले स्पीकर की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर शरनाज मुत्तू, हाँ डॉक्टर शरनाज मुत्तू यहाँ पर हैं। डॉक्टर शरनाज मुत्तू इज द ट्रेजरर ऑफ द विमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट, which works on the holistic development of women and children, and has taken up very interesting projects in the last few years in the questions of adult literacy, skill development, and education and other such aspects. So Dr. Sharnaaz, I have again some sort of interlinked questions. Many different debates have already come up in this conversation. One question which I had put in the beginning, I think I will repeat to you because again and again this is a very common thing, कि you know some जैसे ये कई बार ऐसा होता है कि जो इशू है, इशू का जो रूट है, मेन रीजन है, उसका जो स्ट्रक्चरल बेसिस है, उसको एड्रेस करे बगैर सिर्फ उसके सिम्टम्स, मतलब जो उसके एंड रिजल्ट है उसको एड्रेस किया जाता है, ऑलमोस्ट लाइक बैंडेड सॉल्यूशंस, which often leads to the fact कि मतलब जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं। एंड सेकेंडली देयर इज अ लैक ऑफ विजन, जो कई बार इस कॉन्वर्सेशन में बात आई है, दैट यू नो द very broad problems of education or literacy are being addressed in in a way that is a very self-serving and also with a very short vision कि हम यहाँ पर स्कूल, प्राइवेट स्कूल बना देते हैं या यहाँ पर हम सोइंग मशीन सेंटर डाल देते हैं, and there is no imagination कि will women benefit from that in the end or not, which is why many of these projects fail. तो NGO सेक्टर में जो ये broad concern है, उस पे आप थोड़ा बात करें. And my second question to you is that Tweet has done some very interesting work on post pogrom, post riots, जो खासकर दिल्ली में, जैसे दिल्ली पोग्राम हुआ था, जो rebuilding efforts हुए हैं among women. Many women have become forced to become breadwinners. उनके जो husbands हैं, they have passed away in the violence. So what has Tweet's experience been with this particular line of work? जो political violence के बाद जो एक rebuilding होता है community में, what has Tweet's experience been? And the first question is of course a general question, it's sort of a conversation that we have been having in this panel. So these two questions. Thank you, Shaima. As you know, Tweet, the Women Education and Empowerment Trust, it is a part of Vision 2026. Vision 2026, it was developed a project for the development of the backward community.
देन इसमें जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए काम करने के लिए हम लोग जो टीट 2019 में शुरू किया, मीन्स ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले मजलिस का एक्सपीरियंस है उतना जो बाकी सफा का एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस एक्चुअली टीट के लिए नहीं है। लेकिन जो शुरू में 2006 में जो विषय शुरू किया उसी टाइम में भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए टीट का मीन्स पर्टिकुलर प्रोग्राम्स प्लान किया था। देन जो पर्टिकुलर आपकी जो कंटिन्यूटी, आई थिंक द मीन्स जो स्ट्रक्चरल रिलेटेड इश्यूज जो एक्चुअल इश्यूज को किस तरीके से एनजीओस एड्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली जो एनजीओस को जो पहले हम लिमिटेशन की वहां से शुरू करें फंड का, देन ह्यूमन रिसोर्स fund. I think almost everyone mentioned about the fund related issues. इसके साथ में एक इशू है, I think human resource related issue भी एक problem है. Actually, जो most of the NGOs are depends upon the volunteers also. Means ये दोनों में भी issue ये होता है, फंड कहाँ से आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ रहे हैं, और दूसरा चीज ये वॉलंटियर्स कब अवेलेबल है ना, उनका टाइमिंग प्राइमरी टाइम के बाद ऑब्वियसली जो वॉलंटियर्स काम करने के लिए आते हैं, ये दोनों चीज की वजह से जो प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज ये प्रोग्राम बेनिफिशियरी को किस टाइम पे सर्विसेज चाहिए, उस टाइम पे टाइमली प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज नॉट आल्सो गेटिंग. Then the issue I think means जो फंड के बारे में बोले, मीन्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए एक फंड मिलते हैं, देन स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ हम लोग शुरू करते हैं, या अदरवाइज पर्टिकुलर एक स्कूल शुरू करने के लिए या लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमको मिलते हैं, तो उसी चीज के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। होलिस्टिक लेवल पे जो विमेन को जो इश्यूज है ना एड्रेस करने के लिए वहाँ बहुत सारे लिमिटेशंस वी आर फेसिंग। एंड अदर थिंग इज सिर्फ एनजीओस के लिए जो जितना प्रॉब्लम्स विमेन फेस कर रहे हैं, हर चीज हमको सिर्फ एनजीओस को सोल्व नहीं कर सकते, वहाँ जो कोलैबोरेटिव वर्क ना, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल लेवल, ये सब चीज का एक कोलैबोरेटिव वर्क, देन एक होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड टू एड्रेस दिस इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन. अनदर थिंग आई थिंक द पोस्ट जो प्रोग्राम रिलेटेड जो इश्यूज, उसमें आई थिंक टीट बहुत अच्छा से काम किया है, especially जो economic development environment, means most of the beneficiaries of this program were from the Muslim community. Then Muslim community का I think एक nature ये है जो means something जो related to religion, means उनका जो है ना economic environment के लिए आगे बढ़ना थोड़ा means एक hesitation होता है। यहाँ जो हस्बैंड नहीं है, विडोस मेनली हमारे सपोर्टर्स विडोस है ना, वहाँ उस टाइम में जो मीन्स हस्बैंड नहीं है, बच्चों को पालन पोषण खुद करना है, उस टाइम में हम लोग उनको जो स्किल बेस्ड उनका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट और उनको लाइवलीहुड सपोर्ट और उनको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए सपोर्ट किया। वो अभी तक बहुत अच्छा से मीन्स कुछ केसेस बहुत अच्छा से चल रहे हैं, बहुत अच्छा से उसका जो रिजल्ट आ रहा है, मीन्स दे आर डीलिंग विथ ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द फैमिली. Then here the problem is that जो हम लोग जो बोला सेम चीज, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मीन्स कहाँ काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली एनजीओस के ऊपर आ रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द सर्विलेंस रिलेटेड इश्यूज. Yeah, and one since there is some time for you, I have one follow up question. मुझे एक सवाल अभी याद आया, रुबीना साहिबा ने भी बात उठाई थी कि एनजीओ सेक्टर और नॉट जस्ट एनजीओ सेक्टर, सिविल सोसाइटी ब्रॉडली में एक ट्रैप या एक कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं कि ऑन वन हैंड वी वांट टू, फॉर एग्जांपल इन द एजुकेशन सेक्टर
I'm a little bit familiar with it, is that you want to hold the government accountable. मतलब आप चाहते हैं कि government service provide करे, public education provide करे. Similarly, जैसे disaster, post disaster relief होता है, we on one hand politically हम कहते हैं कि government should do X, Y, and Z. On the other hand, very often we end up going towards setting up the structure ourselves, parallel structure ourselves. क्योंकि हम बोलते हैं कि मतलब अच्छा ये we can't keep waiting for it to happen forever, तो हम स्कूल प्राइवेट स्कूल बना देते हैं या हम ये प्रोवाइड कर देते हैं. तो somewhere don't you think कि मतलब ये एक बहुत एक what can it call, it's a very thin line कि हम we obviously if you're running an NGO, if you're running an organization, you will want to provide some services, but साथ साथ it is important to like ensure that public services, public access, जैसे government से accountability मांगना, employment मांगना या post program जैसे हमने बात किया that rehabilitation मांगना, that is also a very important process. तो ये दोनों चीजों को balance कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली मीन्स हर चीज को हमको गवर्नमेंट के लिए है ना वेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन मैक्सिमम अभी जो विजन के अंडर जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, मेनली जो गवर्नमेंट से किस तरीके से हमको सपोर्ट मिल सकते हैं, उस तरीके से हम लोग इसके लिए लीगल सपोर्ट के लिए एपीसीआर के थ्रू करते हैं. मीन्स जो है ना जो सपोर्टिंग एजेंसीज की थ्रू एपीसीआर के थ्रू लीगल सपोर्ट के लिए करते हैं. और जो दूसरा हम नागरिक विकास केंद्र, एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है विजन का, वो नागरिक विकास के केंद्र के थ्रू हम लोग जो पेंशन के लिए या मीन्स गवर्नमेंट सर्विस को अवेलेबल करने के लिए हेल्प करते हैं. जो टीट का अंडर भी हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं जो विडो पेंशन या मीन्स कितना हम लोगों को जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, स्कीम्स यूज कर सकते हैं, उतना करने के लिए. लेकिन साथ साथ में सिर्फ गवर्नमेंट को मीन्स सिर्फ हमारे जो डेवलपमेंटल सेक्टर हम लोग जो देखते हैं, तो या कंट्री मीन्स नेशनल लेवल हम लोग जो डेवलपमेंट का देखते हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंटल सेक्टर काम करते हैं, तो इतना मीन्स डेवलपमेंट हमारे कंट्री में नहीं होता है. ये साथ साथ में सब लोग एक ही साथ काम करते हैं, तो मीन्स चेंजेस होता है. शुक्रिया. Coming to our next speaker, Shakun Daundia Khed, who is an autonomous, who's been associated with the autonomous women's movement, और वो currently CIEDS, that is Center for Informal Education and Development Studies Collective के साथ associated है, and she has worked on the areas of violence against women, the informal sector, garment workers with unions, and other such campaigns and crisis intervention. So for you, I think you've had a very long run, and within the women's movement, within the organizing of the informal sector. So one question, instead of putting a very specific question to you, since there has been a long debate almost for the last 30-40 minutes, what are your observations or what are your comments on many of the debates that have occurred in this conversation? For example, the political atmosphere that is there currently and how NGOs function around it, the questions of financial transparency, accountability, and surveillance, and also the questions of continuity of a law of how to sustain your work. So is pe aap general, if you want to make any general comments, that is there, that is open for you. And my other question to you is more specifically on your work of organizing and working with the informal sector. There has been a lot of changes in the labor laws, a lot of crackdown on the very basic rights that have been very hard fought by, I would say, by trade unions, by the informal sector workers, by organized sector workers. So what kind of relationship does the NGO sector or NGOs in general have with the workers of the informal sector, such as garment workers and other? You're from Bangalore, and in Bangalore has seen a lot of in the last year itself, a lot of protests by the Paura Karmikas and by other groups. So informal sector and NGOs, this is one relationship that has not been discussed in this too much in this conversation yet. So perhaps you can address it specifically. I think you're muted, ma'am. Yes. Sorry. It always happens.
So much of issues that NGOs are facing, like how have been covered. There are two aspects which I would like to speak upon. Definitely the informal sector. But before that, I would like to speak about the issue of leadership in NGOs, because that is something. See, there are many, like for example, a single person feels, has a lot of passion for a certain issue, goes out and does her work and gets something. That's a different thing. But when you form an NGO, and we started in late 70s, and now Center for Informal Education and Development Studies is a mixed group. There are men and women, and we work under many issues. And in that, there is a particular section that works with women. And I work with this women's section called Gamana Mahila Samoha today. And why we had to form this section? Because obviously to address the issues that women face. Now, the leadership is very important, because it can be, it can be a very visionary, a leader can be very visionary. So she will be the center point around whom all the ideas, from whom all the ideas float. Or you could be a very managerial leader who manages well. I mean, like keep yourself up to date about everything and manage, do a management work with the NGO. Or if it's a social activist, so you're all the time, you're all over, everywhere, advocacy or on the street or with the cases or anything, everywhere you are there. Or you're an influencer, make influence people, carry people with you, different kind of so obviously no one leader can have all these qualities. So we started with we try, even today, after 40 years, we are still trying to work out this concept of a collective. And so if some people may have a writing capacity, I mean, like skill, and there will be people who can be spokespeople very well, debate very well. There can be people who will work on the field very well, like go out there and work on the field. And there can be people who can, liaise with the government departments or the other NGOs, form networks and things like that. So we work with this kind of a concept where there are different people have taken on different roles. We know who is strong in which, and they do this one. So if any project, and also we don't look at every project as a mere project. We also look at it as a process, because it has to be a process that involves everybody and draws upon skills of everybody within the collective, and also with volunteers and others who are interested. So and today we started with working with the violence against women. And of course, we started with domestic violence and the violence at workplace. But we found that it is not enough. And over 30 years, there have been a lot of government institutions with the women's movement, active role and struggles. Lot of government facilities have been set up, in structural facilities, like Women's Commission is there, Women's Development Fund is there. And there is also the whole thing of one-stop crisis centers, the Santwana home, what we call in Karnataka Santwana, many things. Our role, we realize that even though all these institutions are set up, to make them work is a bigger work than doing it ourselves. So and then shelter homes. So we also take it very seriously that our role as an NGO is to our role as an NGO is to actually monitor the working of different government agencies and make them work, whether it's a police, whether it's the health facilities, or it's the hospitals or the education systems. We realize that all the issues that address violence against women. So we really need to see that these agencies work. So a lot of our work goes in monitoring the work, case by case or issue by issue, monitoring the work, and doing advocacy, protests, or whatever methods are required to make them work at a local level. Today, we also realize the importance of working with the violence against women. Also, we realize the importance of broadening it out to addressing the entire communities.
It could be geographical communities, it could be, one particular community, economic communities or social communities. But we feel the importance of working at community level. So we work with youth, we work with men, we work with women, we work with workers, we work with agencies that are local leadership, everybody, so that there is a change within the community. Of course, we help individual women who have issues, but also it's important to see that the changes happen not only at the domestic level, but also at the community level. And that is how we got into informal work. And what we saw was, you asked me about the relationship between NGOs and informal sector, organized or unorganized workers. We got into, actually, we started with looking at work of garment workers, especially, and as a community, garment workers. Bangalore has like 500,000 plus garment workers in apparel industry, out of which almost 85% are women. So the issues that were troubling the women, we felt the need to join with the legal NGOs, lawyers, academicians, researchers, and the women's organizations to do some fact findings in this. And fact finding, addressing issue by issue in every factory, we had to do it so that and today we have not really 100% unionization, but there are unions with about 4,000 workers, 5,000 workers. There are three important unions, garment workers unions working in, and we support all of them. And also, as to the NGO, of course, we work very hard to start, facilitate these unions, but we also realize that unions cannot be under the umbrella of NGOs. I think that's the most dangerous thing that can happen, and they are there. We don't think that NGOs should be running the unions, but we should be supporting, because there are women, like especially unions where there is a large number of women workers, female workers. So it is important that women's organizations do look at sectors where women workers are there in informal sector, and they face the same issues that other women face, as well as work related issues, very acute issues, insufficient work, and where contract work is there, insecurity of work and harassment at workplace, every issue. So we need to be involved as supporters, as advisory, or as, like when they need, go to the front with them. So we are involved in that position. And with sex workers, we started in late 90s, where we realized after the HIV work started, we felt that with the HIV, with the Bill Gates Foundation funds coming in and HIV working, becoming really very visible, and taking in so many sex workers as field workers, etc., to distribute condoms, etc. There was an issue of violence against them on the street, which was not addressed by anybody. The police would just think that these women, like if you're carrying condoms in your bag, then you are criminal, and they would put them in the police station and press all kinds of false charges against them. So we felt that these women have to be supported on violence and dignity, on issues of violence and dignity, and that's what we tried to do. And today there are organizations of their own. Sex workers are in organizations of their own. Again, we don't think that NGOs should be involved in starting these organizations, but definitely as support groups. It's very important for feminist groups to be involved in every aspect of women and work. Otherwise, we are very serious about inclusivity. And even within the organization, we try to be inclusive. And today we are also getting in some younger men to work with us on issues, so that like the whole thing of violence against women, we can't say only women. It impacts only women. It impacts families. So there are children, and there are youth, and who are being indoctrinated with the patriarchy. So we also feel that it's important to work with youth, girls and boys at that level, as much as it is important to create safe spaces for women to work in and live in. So that is our that has been our journey, and it continues. The other thing that I would like to mention
is that, of course, like I think Pankti ji was saying that there is a competition among NGOs, especially NGOs who are working on same issues. But we feel that today is not the conditions today of surveillance and very restricted funds, etc. They are not conducive to working alone. We need to form strong networks, local networks, national networks, and international networks. We concentrate on local networks a lot. We work with every group that's working in the community, maybe environment NGOs, maybe legal NGOs, maybe like NGOs that work with children or with the issues of civic issues. And we need to sort of form networks with them, as so that we can share our strengths with them, as well as draw on their strengths to give a holistic change in the whole community. So that's been our approach. Right. Thank you so much. Thank you. Coming to our final speaker for the day, Dr. Zarina Pipi, who is the treasurer of WINGS, which is the Women's Initiative to Nurture Growth in Society, and which is based in Kerala. And Dr. Zarina, I have you are the last speaker for the day, so you've been very patient. But I think that also means that you got to hear a lot of the things that were spoken about. So, the last speaker before you spoke about the need to work together rather than alone, and particularly in these kind of times. So, why was it necessary in the first place for there to be an organization for professional women, women working in professional fields in the first place? And how does this kind, your experience of this kind of an NGO, which is working particularly, you could say that it is a niche category of professional women, and what kind of interventions have you envisioned, or has your organization envisioned with other groups, non-governmental groups, or other issues in society? And the other thing that I would like to talk to you about, because since you are working on the particular issues of working women, the debate that came up in the rest of the conversation about what it is like for women within the NGO sector, within an organization, what kind of dignity, what kind of hierarchy, all those kind of things. So do professional working women have unique challenges in your view, both within the sector and within their families and the society at large? Yeah, so thank you for giving an opportunity to speak here. So first question that is regarding the collaboration. I would like to say the WINGS means it's Women's Initiative to Nurture the Growth of Society. So actually in our organization, we are having a few many engineers, many doctors, advocates, few social workers, and the like chartered accountants. So it's mainly majority of them, maybe 90% of them are working women. A few are there who are qualified, but now due to them at home, like children and all those things, they are not working. So the people, all the executive members and many of the people, we have 7 chapters in different district of Kerala, and the majority of them are working women. So we as such focus mainly, like our focus is on education, career, legal advice, and wellness. And especially if we say about these professionals, so they themselves need an uplift, like they are very much stressed, they have a family to take care, and they have their professional life to take care. So in between those routines, like morning to evening, they have a regular routine. So they need they get a feeling that we are done, like we have to give back to society. So it's not about, we mainly don't focus on getting funds and distributing, or we don't manage finance much. We just manage the fund for our day-to-day activities. Otherwise, it's for the flood relief and school, putting up a school and all, we don't focus on that. So what we focus on is mainly the first question you told, no, that is why, what is the need for collaboration? And also mainly we can say that we usually collaborate with few organizations. For example, our Calicut chapter is having a project called Project Shraddha.
that project, what they do is, we have another NGO, which is, his name is Message. They have their own building, they have their own regular staff who take care that the children of the fishermen area, they come to school and they have their breakfast, and they take care of their day-to-day affairs, that is going to school and providing books, providing school bags, and all those things they take care. So what our group does is that we understand that even though the schooling is going on well, maybe like my children, like I have my children who are doing professional engineers, doing their engineering and all those things. So these children of the Message, who are children of fishermen and all, they don't get an opportunity to they don't get an exposure about different options. So as we are having a professional group of women, we take care of their such needs. That is, we just try to motivate them to pursue their interest. That is, few are good at drawing, and few are good at reading, and few are having good mathematics. So we'll try to find out what is their where is their talent, and we just try to pull them into the proper space. So that's why this collaboration always helps, because in that case, we don't need our own building, we don't need our own staff to manage the children. So that is about collaboration. And another projects that we have, like as we have many doctors in our organization, we put up medical camps, so that the underprivileged people, they get an opportunity. And another thing is, we conduct programs in such a way that these professional women itself, they have, many of them, as I told, they are having they have to balance the work and family. So we conduct programs like Enjoying Womanhood or something like that, so that they get to know that there are people around who are having similar difficulty. So they themselves get motivated. It's almost like energizing ourselves. So when I got to hear about many of the organizations here, I got a feeling that especially in Telangana and all, they were saying that girls are given, they're deprived of education and all those things. But the scenario in Kerala is very different. Like girls are, we don't have this much of discrimination. Maybe there are in few places it is there. So so that's why our focus, like the main agenda of this program itself was that, as our needs are diverse, our aim, the NGOs are also having a diverse the focus area is also different. So when you people in North are focusing on the underprivileged girls who are not able to get to school, we are focusing on the people who are already in the school, but their line of approach is not, like, we feel that it needs a bit more improvement. So that is one thing. And another thing is that we have a group of psychologists also in our team. So we have a project in which they go to the jail inmates, ladies are there. So they try to motivate them, and they try to understand their problems. So likewise, we are able to give some professional help for such ladies who are already in jail and who are suffering. So like that, our Wings is having mainly such and we have taken up orphanage project in which orphanage is running and another orphanage is already running. So we just go there and we just try to interact with the management who is taking care of the orphanage, so that the facilities not about the food and other things, how about the behavioral problems and all, we can understand, and how we can sort out. So it's mainly about intervention of professional women in the lives of common man. And so it's mainly we are making use of the different already running NGOs are there, already running facilities are there. So we just on weekends, Saturdays and Sundays only, we mainly focus on going around. So we have in different districts, we have our own chapters. So that was about Wings. So what I want to know from this particular group is that here our main, as I see that in few have started in late 70s, few have started in late 90s. So mainly what I want to get to know from you is that here we structurally we have a president, we have a secretary and the like for the state, and for different chapters also we'll have our own structure. We elect them and we have a so what the thing is that as
Shakun madam mentioned, there will be few who will be managing the role, taking the role of a manager, few will be taking the role of influencer and the like. So generally, in order to motivate, or even though we have all these executive members and all those things, generally to keep the organization going, how, according from your experience, what do you think? What should be the right attitude? Like, we should not, the executive members should not be looking upon the president to give instructions. So how the according to you, how can we, any NGO, how can it function for its betterment? What is the best thing to do? Like, if you have some point to share on that, it will be, I think it will be good. So because I have already means we started only in 2016, so ours is a new venture, and we are already having 30-40 years of experiences, so it will be good to hear from you as well. Dr. Zarina, I think what we can do, two things I think we can do in that aspect. One is that, of course, I would request the host to put all the speakers in touch with each other so that there can be some kind of communication. I think that Shaista Rafat Saiba can take care. The other thing is that maybe this question can be posed to the upcoming keynote speaker, and maybe they can address it, since that would be of use to all of you. Since since it is, I think you made a very good point to conclude the panel, that there are people here who have been working for 30 years, 40 years, and there are those who have recently started, particularly I think the last two speakers, Dr. Sharnas and from Tweet, and you from Wings also pointed out the same thing, that, maybe 10 years, 12 years has been the experience. So it was, I think, a beautiful accident that or maybe a deliberate choice, that the hosts got a wonderful diversity of speakers from all states, different states, not all states, different states, very different fields of work, and also some people who spent a lot of time, some people who are still starting out. So I think that is a suitable end to the panel discussion itself, because we should respect the time that is been given to the keynote speaker as well, and the concluding address as well. So I would like to conclude by conclude the panel discussion, that is. Please would request the viewers not to leave or disconnect, because the keynote speaker is here and is ready. So I would like to thank all the speakers who joined for answering so many questions in a short time, for keeping more or less to the time limit given, and for helping all of us as viewers to learn a lot more. Like, personally, I learned a lot from all of you, because I'm very unfamiliar with the field as such, and for me, I was more or less asking questions like a student rather than a moderator. So thank you so much, and back to Arifa ji for rest of the program. Thank you very much, Shaima, and all panel sisters. Thank you very much. Alhamdulillah, काफी कंस्ट्रक्टिव और एंगेजिंग डिस्कशन रहा आज का हमारा। बहुत अच्छी बातें हमारे सामने आई हैं। उम्मीद है कि हम सबको इससे खूब फायदा हुआ होगा, और एनजीओज के कामों के सिलसिले में बहुत कुछ गाइडेंस इससे हमें मिलेगा कि किस तरह हमारी बहनों ने एनजीओज के काम को स्टार्ट किया, कैसे सफर किया, कैसे चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या सवालात हैं जिन्हें फेस करना पड़ते हैं, और कैसे आगे बढ़ी है। तो यकीनन ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अब मैं कीनोट एड्रेस के लिए नीलम शुक्रामनी जी को आवाज देना चाहूंगी कि वो कीनोट एड्रेस हमारे सामने पेश करें। नीलम शुक्रामनी जी, जो कि प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की, और एनजीओ मैनेजमेंट ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें आपने काफी काम किया है, और फिलहाल अभी वो ये काम कर भी रही हैं। लिहाजा मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो है हमारे सामने कीनोट एड्रेस रखें। Thank you so much, Shaista ji. I hope I'm audible. जी जी जी। तो जैसे शाइस्ता जी आपसे बात हुई थी, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदुस्तानी में बात करूं, तो मेरी प्रयास यही रहेगी कि मैं हिंदुस्तानी में बात ही करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये जो आपका प्रयास है, आप ये चाहते हैं कि ये क्योंकि आपके फेसबुक पेज पे भी जाएगा, तो
इसके बाद में भी कुछ अगर व्यूअर्स देखना चाहें तो उनके लिए आसान भाषा में वो चीज़ अवेलेबल रहे। डज दैट स्टैंड? मैं हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, मिक्स करूं, जैसा आप बोले। मिक्स कर लीजिए मैम। ओके, हाँ मिक्स ओके कर लीजिए। ठीक है, मैं मिक्स कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू जमात इस्लामी women wing for giving me this opportunity to be amongst such an esteemed panel. Uh, People who have taught me and people who have, without them knowing it, probably have also mentored my practice. तो उनके समीप बात करना मेरे लिए बहुत ही एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इसी के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। बहुत हेल्पफुल रहा सबको सुनना, एंड a lot of insights have also been gained by listening to everyone, and obviously the journeys, and I have no equivalent of the kind of work that people have done, because I'm more of an academic, a researcher, and also of course I have been very intricately involved in the field, and particularly gender-based violence is, at least as far as the women's issues are concerned, more of my work has been on gender-based violence. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई भी पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा जो फोकस है, द फोकस ऑफ माय presentation is going to be more in terms of what are the kind of issues that the women NGOs should be taking note of, or should at least be aspiring to take note of. तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर विमेन एनजीओज को ध्यान देने की जरूरत है मेरे हिसाब से, या आइंदा चल करके उनको उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं और उसी के ऊपर मैं अपनी बात को इलैबोरेट करना चाहूंगी। ये कोई डेफिनेटिव सीक्वेंस नहीं है, पर मैंने जो भी मुझे विचार हैं वो मैंने अपने लिखे हैं, और उसके बेसिस पे मैं आप सबसे गुफ्तगू करूंगी। तो मेरा पहला, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट जो भी संस्थाएं हैं जो कि विमेन इश्यूज के ऊपर काम कर रही हैं, उनमें जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके भी अपने संघर्ष हैं, और इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। द वुमेन हु आर वर्किंग इन women led or women run NGOs, or NGOs which are working on women's issues, those women also have their own personal struggles, and that is something which we as an organization cannot ignore. I just want to cite a particular example. Again, this is from a research of my own scholar, Pushpa, who did a study on women police officers who are working in crime against women cells. This thesis is also available on the Shodh Ganga website. She completed her thesis in 2019, where she was trying to look at the gender definitions to which women police officers are exposed to in their natal family, their matrimonial family, and their work life, and how that influences their work with survivors of violence. तो वो कोशिश कर रहे थे इसको समझने के लिए कि क्या कनेक्ट है एक्सपीरियंस्ड और एक्सप्रेस्ड में, मतलब जिस तरह के उनको जिस तरह के जेंडर्ड एक्सपीरियंसेस उनके खुद के हुए, क्या वो कहीं ना कहीं उनके काम के ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते हैं। और उसमें ये बहुत क्लियरली निकल करके आया कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स जो चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एसीपी हो, क्योंकि इन सब रैंक के पुलिस ऑफिसर्स उनकी स्टडी में शामिल थे, उनके अपने बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं अपनी नेटल फैमिली में, अपनी मैट्रिमोनियल फैमिली में। और मैं उसका एक उदाहरण जो कई बार मैं देती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि विमेन की अपनी स्ट्रगल्स क्या हैं। तो एक विमेन पुलिस ऑफिसर जो पुष्पा को इंटरव्यू दे रही थी उसकी रिसर्च के तहत, उसने ये बात कही कि जब उसकी शादी होकर के वो अपने ससुराल में गई, तो वहां पे जाने के बाद में जो कुछ ही दिनों के अंदर जो एक स्टेटमेंट उनकी
सास ने उनको दिया, वो स्टेटमेंट ये था कि थानेदार नहीं होगी तो वहां की, यहाँ पे तू बहू है और बहू बन करके रहो. You might be a police officer, or you may be a police officer as far as your police station is concerned, but over here you are a daughter-in-law and you have to live by the rules of the house. Now ये statement clearly दिखाता है कि जो women जो so called, क्योंकि उनकी biological identity के आधार पर हम उनको अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं, चाहे वो पुलिस के पुलिस फोर्स में हो, चाहे वो विमेन ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस में हो, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में हो, या फिर वो अपना जजेस के तौर पे हो, महिला कोर्ट में हो, कई सारी जगह पे, या सीडब्ल्यूसी के अंदर हम कहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर हम कहते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. लेकिन हमको ये मानना चाहिए कि उनकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स भी हैं, और कई बार ये इंडिविजुअल स्ट्रगल्स उनके काम को भी इम्पैक्ट करते हैं. तो एज विमेन लीडर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते. तो कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स निकल करके आए, क्योंकि पुष्पा का जो स्टडी था वो मेरे लिए भी बहुत ही रिवीलिंग था, क्योंकि उसमें दो तरह का काम किया गया था. एक काम ये किया गया था कि उन्होंने विमेन पुलिस ऑफिसर्स को इंटरव्यू किया था समझने के लिए कि उनके अपने जेंडर्ड एक्सपीरियंसेस क्या थे, या किस तरह के जेंडर डेफिनेशंस उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं. और दूसरी तरफ उन्होंने इनके सेशंस को ऑब्जर्व किया था जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स ले रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वो एक जेंडर जस्ट फ्रेमवर्क से जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ में काम करती हैं, या क्या वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस के आधार पे उनके साथ में काम करती हैं. तो ये समझ में आया कि बाय एंड लार्ज वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी हो जाते हैं. जैसे कुछ एक आध स्टेटमेंट्स थे कि हम भी सुबह से शाम तक मरते पिटते रहते हैं, तो तुमने किया तो कौन सा बड़ा काम किया, कि वी हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. आपको क्या लगता है कि हम ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, ये छोटे छोटे मसले लेकर के यहाँ पे आ जाते हो? यानी कि what you are trying to do by making this kind of a statement, कहीं ना कहीं जो वुमेन सर्वाइवर है, जो बहुत हिम्मत कर करके वहां पे पुलिस स्टेशन में आई है, उसको ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं जो उसको लगता है ये पर्सन इज इन अ पोजिशन ऑफ पावर, लेकिन इसकी भी जिंदगी अगर ऐसी है तो क्या मेरी जिंदगी अलग होगी? तो और वही डेफिनेशंस उसको उनके काम को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो हमें ना केवल जिसको हम क्लाइंट, बेनिफिशियरी, सर्विस यूजर के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट ओनली हैव वी टू वर्क विद देम, बट वी आल्सो हैव टू वर्क विद द women who are service providers, because these women who are service providers have also been through their own individual struggles and they may not have necessarily received any kind of support for them. एक और example to substantiate what I'm trying to say is the fact that उनकी ही स्टडी से ये निकल करके आया था कि the husband would decide कि आप कितने कपड़े पहनेंगी. वो women पुलिस ऑफिसर थी, कितने कपड़े पहनेंगी, कौन से कपड़े पहनेंगी, और हस्बैंड ही कपड़े खरीद करके लेके आते थे. और ये स्टडी बहुत पुरानी नहीं है, 2019 में ये स्टडी कंप्लीट हुई है. नाउ ये कहने को मतलब ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है. समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ. दूसरी चीज जो हमें एक ना केवल एज अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है जेनेरिक भी हैं, सबके लिए भी एप्लीकेबल हो सकती हैं, कि जो दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहती हूँ वो ये है कि विचारों और व्यवहार में विविधता स्वाभाविक है. विचारों और व्यवहार में विविधता स्वाभाविक है, और इसकी बात हमें शुरुआत से ही बच्चों के साथ में करनी चाहिए. What I'm trying to say is that there will always be a diversity of opinion and there will be a diversity of behavior also. And unless and until हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा हमारा एक इवैल्यूएटिव लेंस होगा लोगों को देखने का कि ये सही है और ये गलत है. इट्स लाइक देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीस विजिल जो साउथ अफ्रीका से फंक्शन करती है. तो उनका एक लेक्चर मैं सुन रही थी, वहां पे एक को फाउंडर है उनकी शिरीन. तो उन्होंने कहा कि कोई भी विचार ऊंचा या नीचा नहीं होता. एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम मान लीजिए अगर हम
एक मान लीजिए जैसे अगर मैं ये देखूं, एक पार्टिसिपेंट लिस्ट ही देख लूं, अब किसी का जो नाम का लोगो है उसका बैकग्राउंड ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का पर्पल है, किसी का रेड है ना। डाइवर्सिटी है, ये भी डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ब्लू रेड से अच्छा है या ग्रीन रेड से अच्छा है, ये तो विविधता है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हमें एक समाज की का निर्माण करना है, जहां पर एक समाज का निर्माण करना है जहां पर लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस हो डाइवर्सिटी के लिए, तभी आप देखेंगे कि जिस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो पब्लिक लेवल पे हो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हमें मैनेज करना है, उनको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए ये डाइवर्सिटी के ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है। और ये डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर, द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट, वो हमारे एजेंडा में कहीं पे शामिल हो जाना बहुत जरूरी है, और आज के संदर्भ में और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल हम ये कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हमारा तर्क है वो सही है, दूसरे का तर्क गलत है। वो आई थिंक वो जो विविधता है उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और वो बचपन से, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू हैपन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, दैट हम उनको ये ताकि हम उनके साथ में डाइवर्सिटी के ऊपर काम करें। और ये मेरा दूसरा चीज है जिसको मैं सामने रखना चाहूंगी। तीसरी चीज जिसको मैं सामने रखना चाहूंगी वो, और मैं जब कह रही हूँ वुमेन एनजीओज, मैं ये कह रही हूँ कि हमें केवल एक रिस्पॉन्सिव काम नहीं करना है, हमें प्रिवेंटिव काम भी करना है। हम ये मान रहे हैं इस चीज को कि हमें केवल, हम ये बार बार कह रहे हैं, हमें एक सिम्टम को नहीं एड्रेस करना है, हमें कॉज को एड्रेस करना है। और अगर हमें कॉज को एड्रेस करना है तो हमें बचपन से काम करना है। और हम ये देख रहे हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि ड्रग अब्यूज या अल्कोहलिज्म जो है वो वायलेंस से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका पावर से भी बहुत बड़ा एक ताल्लुक है, लेकिन ड्रग अब्यूज एंड वायलेंस जो है वो डेफिनेटली वायलेंस को ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है। और अगर हमें इस विषय के ऊपर, so we need to work on this with children itself. Why I'm saying that over here is, or why am I using this particular forum, because these days if we move out into the field, हम देखते हैं कि even children as young as 6 years they are into drug abuse right now. And what is going to be the shape of their adult life relationships, leave alone their child level relationships, इनके adult life relationships क्या होंगे अगर ये इस तरह के substance abuse में रहे? तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक हमारे स्टूडेंट्स अभी फील्ड वर्क में गए। हमारा सोशल वर्क के प्रोग्राम के अंदर फील्ड वर्क, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है जिसमें एक स्टूडेंट को काफी सारे आवर्स जो हैं, तो अभी 1 महीने का कोविड में हमने कॉन्करेंट से ब्लॉक में शिफ्ट किया, तो 1 महीने का फील्ड वर्क था स्टूडेंट्स का, रेगुलर फील्ड वर्क में जा रहे थे। तो एक कम्युनिटी, में नाम लूंगी उस कम्युनिटी का, एक गाँव है जो दिल्ली से थोड़ा सा सटा हुआ है, दिल्ली का नहीं है, दिल्ली से सटा हुआ गाँव है। वहां पे हमारे स्टूडेंट्स फील्ड वर्क कर रहे थे। तो वहां पर जब ये गए फील्ड वर्क करने के लिए और आखिरी के दिनों में, तो उन्होंने एक बच्चों के साथ में कैसे काम करना है मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो वहां पे जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो था, जिस ग्रुप के साथ में वो काम कर रहे थे, एक और बच्चा वहां पे था, वो एक लंबी सी एक स्टिक लेकर के और वो फेंक रहा था, वो फील्ड के अंदर उस स्टिक को फेंक रहा था। इट पिक्ड अप अ लॉन्ग स्टिक एंड ही वाज थ्रोइंग इट एट अ डिस्टेंस। तो इन स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाट दैट चाइल्ड वाज डूइंग। तो उन्होंने बोला कि मैं, वो एक गेम होता है ना भैया, जैवलिन थ्रो, मैं वो जैवलिन खेल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने नीरज चोपड़ा को देखा था और उससे मैं प्रभावित हुआ, एंड आई वांट टू आल्सो बिकम अ जैवलिन थ्रोअर, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट, सो आई हैव अ ड्रीम। Now, the point I'm coming down to is, I have a dream that I want to become a javelin thrower. अब इसी बात को उन्होंने आगे ले जा करके, जो इनका बच्चों का एक ग्रुप था, 6 से 8 साल का, 10 साल का ग्रुप था, उन ग्रुप के साथ में उन्होंने बात करी सपनों के ऊपर। They asked children to dream about they asked them to think of what their dream was. So then every child had a different dream. Every child came up with what their dream was. उनका सपना क्या था। फिर उन्होंने उनसे बात करी कि अच्छा आपको क्या लगता है कि इस सपने
को अचीव करने के बीच में क्या चीजें आड़े आ सकती हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बिकम हिंड्रेंसेस इन योर अचीविंग दैट पर्टिकुलर ड्रीम। वेरी इंटरेस्टिंगली बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ये सब नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये जो शराब गुटखा ये जो ड्रग्स का चल रहा है ना, ये चीज जो है ये हमारे सपने के आड़े आ सकती है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। नाउ दिस इटसेल्फ शोज दैट children have the ability to be able to recognize these things, and discussion on these issues right from an early age with them, that how these things can become a blockade in their achievement of what they visualize as their dreams is so important. And this discussion has to happen with children. उसके हमें innovative तरीके ढूंढने हैं, हमें ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमें इनोवेटिव बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत है अपने काम के अंदर। वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन आवर वर्क, बिकॉज मैं बार बार ये कहती हूँ, जब मैं पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन के ऊपर बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हम एक सिगरेट का पैक है, उसके अंदर 80% स्पेस जो है इट इज शोइंग अ हॉरिफाइंग पिक्चर, बहुत ही खतरनाक पिक्चर दिखाती है, पर क्या वो लोगों को रोकता है वो सिगरेट का पैक खरीदने से? नहीं रोकता। फिर भी लोग जाकर के उस सिगरेट के पैक को खरीदते हैं, फिर भी वो लोग जाकर के उस गुटखे के पैक को खरीदते हैं। स्टिल पीपल गो एंड बाय दैट। सो वी हैव टू थिंक ऑफ इनोवेटिव मीन्स, और ये हमारा हमने ये एक इनोवेटिव मीन्स था ये डिस्कशन को लेके आने का कि हमारे सपने और क्या चीजें उसमें आड़े आ सकती। So how do we have to keep thinking in terms of what are the innovative means through which this discussion can be brought in and children can be weaned away from getting into behaviors which will be detrimental to their development. किस तरह से उन्हें हम उन चीजों से हम बचा सकते हैं जो कि उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के आड़े आ सकते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो अपनी सोच है, जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में विद ऑल लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एनजीओ सेक्टर, हमारी अपनी सोच जो है उसको दूरदर्शी होना पड़ेगा। वी हैव टू हैव अ फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, एंड हमको ये सोचना है कि आज जो हम देख रहे हैं इसका प्रभाव आगे जाकर के क्या पड़ेगा। सो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट टुडे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन फ्यूचर। एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज का कि हम बार बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हें सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए। लेकिन जो हम आज जिस तरह का हम सेक्सुअल वायलेंस देख रहे हैं, इवन जिसका परपेट्रेटर कई बार बच्चे भी हैं, जिसका परपेट्रेटर अडल्ट्स भी हैं, हम ये देख रहे हैं कि आर दे रियली रिस्पेक्टफुल, आर दे रियली एबल टू रिस्पेक्ट द बॉडी of another person, are they able to respect the choices of another person? तो हमको ये सोचना है कि हम एक लोगों को लगता है कि हमने अगर किसी को नमस्ते कह दिया, किसी को गुड मॉर्निंग कह दिया, किसी को अस्सलाम वालेकुम कह दिया, किसी को सत श्री अकाल कह दिया, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट कर दी। किसी के पैर छू लिए तो हमने उसकी रिस्पेक्ट कर ली। दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। टू मी दैट इज अ वेरी वेरी सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। किस तरह की रिस्पेक्ट की जरूरत है? जहां पे रिस्पेक्ट फॉर आइडियाज, रिस्पेक्ट फॉर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेस ऑफ अनदर पर्सन, रिस्पेक्ट ऑफ द चॉइस ऑफ अनदर पर्सन कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या नहीं शेयर करना चाहते हैं, कितना शेयर करना चाहते हैं। हम किसी को प्रॉड ना करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर, रिस्पेक्ट फॉर योर चिल्ड्रन, ऑल दैट इज सो इम्पोर्टेंट दैट और इसके ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है कि रिस्पेक्ट आखिरकार है क्या, और रिस्पेक्ट इस नोशनल टर्म से हट करके एक रियल टर्म में ट्रांसलेट हो। मेरे पास में बहुत कुछ है कहने के लिए, जो आप चाहेंगे कि मैं बंद कर दूं तो मैं बंद कर दूंगी। तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ अदर्स ऑल्सो। should I continue for another 5 minutes or should I close? I think you can continue for 5 minutes, ma'am. Okay, thank you. So another thing that I feel also is that
there is a lot of need, like अभी पीछे काफी बातचीत हो रही थी सोशल नॉर्म्स के ऊपर काम करने की, जो सामाजिक मानदंड है, सामाजिक मानक हैं, उनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. बिकॉज हम आज इवन इफ यू नो सभी we need to recognize that not all social norms are favorable. Some of them may be favorable and some of them are also detrimental. So let us take a lot of examples, and I feel this is extremely important because मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं there is a lag कि एक तरफ हम we are talking about education, we are talking about बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारे जो सामाजिक जो नियम हैं उनके अंदर हम तब्दीली लेके आने की जरूरत नहीं हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर जरीना शेयर्ड about the fact that in Kerala, girls' education is not an issue, but dowry is a big issue. I remember that one of my former students, one of our alumnus, who was working in Andaman at the time of tsunami, and you will agree with that, ma'am, that a lot of people from Kerala were located in Andaman at that point of time. They were working over there. When the tsunami came, all the gold that they had saved for the daughter's marriage, that gold was swept away by the sea. जो उनके पास में जो गहने थे जो उन्होंने सेव किए थे, वो गहने जो हैं they got swept away by the sea. And उसके बाद में after the tsunami they may have survived, but उनकी एक चिंता थी कि अब हमारी बेटियों की शादी कैसे हो. And ये हुआ because that person worked in Andaman for a significant period of time. बहुत सारी लड़कियों की शादियां टूट गई क्योंकि उनके पास में वो गहने नहीं थे देने के, वो सोना नहीं था देने के. So मैं इसको कहती हूँ कि ये एक डिस्कनेक्ट है कि एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने जो सामाजिक नियम हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, उसमें हम तब्दीली नहीं लेकर के आ रहे. आप कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन आपको उतना ही दहेज देना है. आप कितना भी पढ़ लिख लें, आपको घर में कोई भागीदारी नहीं है आपकी. आप कितना भी पढ़ लिख लें, आपको फिर भी एक, आई एम सॉरी टू से दैट, फिर भी आपको एक बेटे को जन्म देना है. यू नो देयर आर सो मेनी नॉर्म्स which are kind of which are not in congruence with the kind of changes that are happening within the society. तो मुझे लगता है कि social norms के ऊपर obviously बहुत आसान नहीं है, but this has to happen. The work on changing the social norms is absolutely essential. मुझे मैं with due respect I'm saying that there was another case in Samastipur where there were two social workers who are working very, very sincerely for ensuring that the children's education took place. इसमें there were two girls who cleared a scholarship exam for getting higher education, and their higher education was going to be sponsored by an organization. So their fees, their stay, everything was to be sponsored by them. When they cleared their exam, in which was a 5-round exam, उन्होंने 5 rounds clear करे in order to be able to get that scholarship. And after getting that scholarship, the persons who were working with them, 10 children had qualified. Out of that, there were 2 girls. The parents, because they had cleared 12th standard, the parents immediately after the clearing of 12th standard fixed up their marriages, and very unfortunately the marriage, one took place yesterday and one is taking place today. And after that, the opportunity for education is not going to be there. So the person was feeling that I wish this opportunity had gone to someone else. But to me, that is not the question. To me, the question is that what have we done as far as our, because parents still feel that they have to get their girls married at an early age, because somewhere or the other, the control over they only believe that the control over the sexual life of a woman, and I may sound a little atrocious over here, can only be had if they are going to be married somewhere. Or for that matter, they may not find another groom. They may not be able to find a groom. Or they may, probably it's going to become and they have to eventually go and get married. So they are like somebody else's
wealth, so they can then decide whether they would like to educate them or not. So ये जो social norms हैं, these norms are somewhere or the other, to my mind, still very retrograde. They are still very, very primitive in nature. So we haven't really worked on our social norms to the extent that we should be working on them. And that's something I feel which is very, very important as far as work on women's issues is concerned. इसके लिए एक now there are a lot of other things. Last point I would like to make over here is that what is very important is that right from childhood, again, we have to engage children in critical thinking. That will help them to even challenge the social norms. कि उनको हम गहराई से सोचने के लिए प्रभावित करें, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रभावित करें, कि ताकि वो कोई भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर लें, उसको क्वेश्चन करें. और वो जो क्वेश्चनिंग होगी, उसी से शायद हमारे ये जो सामाजिक नियम हैं, जो एक तरह से जो हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ सामाजिक नियम है, जैसे मैंने कहा सारे सामाजिक नियम detrimental नहीं है, but some of the social norms which are detrimental to gender justice, at least they will be questioning those things rather than following them blindly. So that critical thinking, helping them, like for instance, helping them to understand why a particular, helping them to question those norms, helping them to look at what are the short-term and long-term consequences of following this particular norm. And are there any kind of, are there any kind of alternatives? What are the short-term and long-term consequences? What could be the long-term consequences of getting your daughter married at an early age? What could be the long-term consequences of seizing the education of your girl? What could be the long-term consequences of providing meals to your entire village at the time of marriage and then getting into debt after that? So what are the long-term consequences of that? So that kind of a critical thinking is important, is extremely important as far as our interventions at a proactive level are concerned. So we have to not only work at a symptomatic level, we also have to work at addressing the root causes or the factors or the determinants of whatever is happening of the situation of women as well. I can speak for, probably further also, because I had a lot many more points, but I do understand and respect the time of others as well. If there are any questions, queries, I also wanted to talk about the importance of language and how it is very important for us to also, probably sometimes even when we are working with women as well, what is the kind of language that we use at house and what are the kind of messages that we are conveying through that. But I would stop over here. If there are any questions, I would like to. Thank you so much for giving me this opportunity, and more than happy to be a part of any further initiatives or any other further discussions. Thank you, ma'am. Thank you very much. बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने अपनी बात रखी है और आपने समाज में पॉजिटिव तब्दीली की जो बात की है, बहुत बहुत थैंक यू मैम. अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्रोग्राम की कन्वीनर बहन शाइस्ता रफत साहिबा से कहूंगी कि वो कंक्लूडिंग एड्रेस से इस प्रोग्राम को समराइज करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अपनी बात शुरू करती हूँ उस दयावान के जिक्र से जिसने हम सब के दिलों में रहम और मोहब्बत का जज्बा डाला. डियर स्पीकर्स, पैनलिस्ट और मेरी अजीज बहनों, जिस तरह से ये प्रोग्राम, जिस टॉपिक पर बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं, बड़ी अहम और कीमती बातें हैं. इसको हमको इस पर गौर करना चाहिए और इस सिलसिले में हमको और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. इंसानी जो समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो असल में एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करने और एक अच्छा समाज बनाने की ज़रूरत पर जोर देता रहा है हमेशा से. और ये इंसान की नीड भी है, क्योंकि एक अच्छे माहौल के बगैर, एक अच्छे समाज के बगैर,
इंसानों का इस जमीन पर जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से आज देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि जब जिंदगी में इश्यूज, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं तो किस तरह इंसान तकलीफ महसूस करता है, दुख महसूस करता है और किस तरह से उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। अभी जैसे हमने अपने पैनलिस्ट से सुना, जैसे हमारे पास 7 पैनलिस्ट इस पैनल डिस्कशन में अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। तो जिस तरह सबसे पहले फ्लेविया एग्निस साहिबा ने कानून के सेक्टर में कि लॉ सेक्टर के जरिए से किस तरह एनजीओ काम कर रही है, उनका एक तवील तजुर्बा है, एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। उन्होंने बहुत सारी बातें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर रखी हैं और ये भी कहा है कि हमारे पास जो अहमियत होनी चाहिए वो औरत की होनी चाहिए, कि मतलब हम एज ए विमेन उनके इश्यूज को देखें बगैर किसी जेंडर के, बगैर किसी रिलीजन के। और उन्होंने बताया कि 91 से जो उन्होंने सफ़र शुरू किया है तो इस सिलसिले में किस तरह वो आगे बढ़े हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी पैनलिस्ट हमारी रूबीना नफीस जी थी। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के सिलसिले में अहम बातें रखी हैं कि असल रियल इश्यूज क्या हैं, काम कैसे करना चाहिए और जो एजुकेशन सेक्टर में जो इश्यूज हैं उसके सिलसिले में एनजीओस क्या रोल अदा कर सकते हैं। हमको जिस तरह हम ये कोशिश करते हैं कि नई नई संस्थाएं बनाएं, नए स्कूल बनाएं, बल्कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर वहाँ पर हम सहूलतें प्रोवाइड करने वाले बने। उसी तरह हमारे दरमियान गुजरात से हमारी बहन पंक्ति जोग थी, उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी और बताया कि जिस तरह आरटीआई के मामले में एक बहुत सेंसिटिव इशू है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो उस सिलसिले में उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं और ये भी बात बताई कि जितना सेंसिटिव इश्यूज पर हम काम करेंगे, चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा हमारे सामने आएंगे। फिर हमारे दरमियान हमारी एक बहन तबस्सुम नाज साहिबा भी थी। उन्होंने भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताया कि हम वो लोग हैं जो की कोई सुविधा उनके पास नहीं है, विलेजेस में रहते हैं, डाउन ट्रोडन एरियाज में रहते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम जो पहलू है वो यही है कि फील्ड वर्क हमारा उन एरियाज में बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है, जबकि लोग इस तब्दीली को समझने के लिए तैयार नहीं होते और महिलाओं को अधिकार देने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसी तरह हमारे दरमियान शरनाज मुत्तू ने भी ट्वीट की कुछ डिटेल्स हमारे सामने रखी हैं, बताया कि उन्होंने कि किस तरह महिलाओं के परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। फिर हमारे दरमियान शकुन मैम भी थी, उन्होंने बहुत बातें हमको बताई, बहुत सारा आगे का रास्ता भी बताया और जो फोकस किया है कि लीडरशिप बड़े माने रखते हैं एनजीओ में। लीडरशिप को विजनरी भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है उनके पास फ्लो ऑफ आइडियाज भी हो और उसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी। ये बहुत सारे डायमेंशंस हमारे सामने आए। फिर विंग्स से हमारी बहन भी थी, उन्होंने भी हमको ये बताया कि जैसे प्रोफेशनल्स के जो इश्यूज हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ कैसे वो काम करते हैं। और अगर हम कुछ इश्यूज पर काम भी कर ले लेकिन समाज में तब्दीली ना आए और सोशल नॉर्म्स चेंज करने में हम कामयाब ना हो पाए तो ज़्यादा देर हम काम नहीं कर पाते। तो हमको एक बहुत समाज में एक बहुत दूर रस तब्दीली की तरफ हमको कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारी एक बहुत अहम स्पीकर हमारे दरमियान थी नीलम शुक्रामणि जी। इन्होंने भी बहुत सारी बातें अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के रिसर्च के बेस्ड पर कुछ तजुर्बात हमसे शेयर किए और हमारी आंखें खोल देने वाले कुछ पॉइंट्स हमको हमारे सामने रखे कि हम उन इश्यूज पर भी सोचें। हम देखें कि अगर हम समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं और इसकी इच्छा अपने अंदर रखते हैं तो हमको कहाँ से काम का आगाज करना चाहिए।
हमको रूट कॉजेस की तरफ जाना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, तभी हम सोशल बिहेवियर को चेंज करने में कामयाब हो पाएंगे। मोहतरम बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दरअसल ये वही लोग काम कर सकते हैं जिनके अंदर समाज सेवा का जज्बा हो, लोगों से रहम और हमदर्दी के जज्बात हों, लोगों के इश्यूज पर, लोगों के प्रॉब्लम्स पर उनके दिलों में तड़प पैदा होती है, तो ऐसे लोग आगे बढ़कर लोगों के कठिन भरी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिशें करते हैं, और ये होना चाहिए। इंसानी समाज इसी से बनता है और इंसानी समाज बेहतरी की तरफ इसी जज्बे के जरिए से जा सकता है। और ये जज्बा आज का नहीं है, हमारी जो NGOs का जो हिस्ट्री है, हम जानते हैं कि 19वीं सदी से 19th सेंचुरी में NGOs ने बाकायदा संस्था की एक का रूप इख्तियार किया और उसके नॉर्म्स बने, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, लेकिन इंसानी समाज में कभी भी इस तरह के काम से इंसानी समाज खाली नहीं रहा। हम प्री इस्लामिक एज में भी देखते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड नहीं मिली थी, उस वक्त भी अरब के उस सोसाइटी में जहां पर बहुत सारी जुल्म और ज्यादती थी, उस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होने के लिए लोगों ने, वहां की सिविल सोसाइटी ने एक इदारा फॉर्म किया था। उसके रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट थे, लेकिन बहरहाल उसका मकसद भी वही था कि समाज में जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको हम कैसे रोकें, लोगों को कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो ये इंसान का एक बहुत पुराना जज्बा है। मजहब इसको और ज्यादा पॉलिश करता है, उसको और ज्यादा चमकाता है। हर मजहब में भलाई की तालीमात मौजूद है। तो इस तरह हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब काम कर रहे हैं तो इसके लिए दरअसल स्पिरिट ऑफ चैरिटी और स्पिरिट ऑफ सोशल वेलबीइंग बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। जमात इस्लामी हिंद इस कंट्री की एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 75 ईयर से इस मुल्क में काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि इस संस्था में सोशल वर्क का काम, सोशल रिलीफ का काम, रिलीफ वर्क का काम हमेशा रहा है। नेचुरल क्लाइमिटीज हो या मैन मेड डिजास्टर्स हो, जो कुछ भी हालात इन 75 ईयर्स में मुल्क के वासियों पर आते रहे, ये संस्था बगैर किसी जेंडर और बगैर किसी रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन किए हुए हर इंसान के लिए मदद फराहम करने का इसका एक अपना रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड खुला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम जो जमात इस्लामी हिंद वीमेंस विंग की जानिब से आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसके पीछे भी यही जज्बा है कि हम अपनी उन बहनों के साथ जो मुल्क के डिफरेंट स्टेट्स में इस तरह के काम कर रही हैं, हम उनसे रहनुमाई लें, उनसे हम कुछ सीखें, हम एक दूसरे के आइडियाज शेयर करें और इन आइडियाज को लेते हुए एक बेहतर सफर की तरफ हम जाएं, एक बेहतर अपना जर्नी हम आगे तक NGOs के सिलसिले में और करें। इस मुल्क की जो सोशल और पॉलिटिकल सूरत हाल है, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। एक बात बहुत अहम आई थी हमारे पैनलिस्ट की जानिब से कि जैसे हमारी बहन पंक्ति जोग ने कहा था कि शोषण करने वालों को भी हमको झिझोड़ना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, ये बात हमको याद रखना चाहिए। यही बात इस्लाम भी कहता है कि आप जिस पर शोषण होता है उसकी भी आप मदद करें, जो शोषण करने वाला है उसकी भी आप मदद करें। लोगों ने पूछा कि शोषण करने वाले की मदद कैसे हो सकती, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसका हाथ पकड़ो कि वो जुल्म ना करे, जुल्म को रोकने की कोशिश करो, ये उसकी मदद करना है। तो हमको इन चीज़ों को सामने रखते हुए इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक अच्छी कंडीशन में उसी वक्त होगी जब यहाँ के रहने वाले वासी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे और एक दूसरे के तय, एक दूसरे के जो राइट्स हैं उसका आदर करें और एक दूसरे को राइट्स दिलाने की जो स्ट्रगल है उसमें जो है अपना योगदान देते रहें। और फिर उसके साथ साथ जो लोग शोषण करते हैं उनका हाथ पकड़ने का हम काम करते रहें। मुझे ये बात एक बार और कहना है कि हम काम करते हुए समाज में किसी ऐसी औरत को जिसके पास कोई उम्मीद ना हो, जिसके पास कोई रिसोर्स ना हो, जिसके पास कोई एक आशा की किरण नजर ना आती हो, हम उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं,
उसके अंदर हौसला पैदा करते हैं, तो इसकी कोई कीमत नहीं होती। इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह जो तजुर्बात हमारी बहनों ने, हमारी पैनलिस्ट बहनों ने यहाँ पर शेयर किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, उसकी भी कोई कीमत नहीं होती। इंसानी समाज तजुर्बात के आधार पर आगे बढ़ता है और अच्छे तजुर्बात से रोशनी हासिल की जाती है, और जो ठोकरें लगती है उनसे बचने की कोशिशें की जाती हैं। बस मैं इतनी बातें कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, और आगे भी मैं हमारी पैनलिस्ट बहनों से भी ये गुजारिश है कि हम आगे भी एक ऐसा तालमेल बनाएं कि हम एक पूरा NGO का नेटवर्क इस मुल्क में कायम कर सकें, और हम आपस में एक दूसरे के आइडियाज शेयर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, और इस मुल्क को और यहाँ की पूरी धरती को और यहाँ के वासियों को हम सुकून और शांति का एक ऐसा मैसेज दे सकें कि लोग अपने प्रॉब्लम से उठने और अपनी एक बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता रफ़त साहिबा। अब हम प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी समाप्ति पर सबसे पहले मैं ईश्वर अल्लाह का आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने हमें तौफीक दी और हमारी मदद फरमाई कि आज हम इस सुंदर वेबिनार को कर पाए। इतना सुंदर ये प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम हम आज इसको कर पाए हैं। साथ ही साथ मैं आज की हमारी मेहमान बहनें नीलम शुक्रमणि जी, फ्लेविया एग्निस जी, रूबीना नफीस फातिमा जी, पंक्ति जोग जी, BK शकुन जी, तबस्सुम दास जी, डॉक्टर जरीना जी, डॉक्टर शरनाज मुथुल जी, इन तमाम का आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ और इन्हें थैंक्स कहती हूँ कि आप सब ने बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी बात को हमारे सामने रखा, पूरा पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती वक्त दिया, वैल्यूएबल डायलॉग हम सब के सामने पेश किए। बहुत खुशी हुई। साथ ही खुशी इस बात की मैं महसूस कर रही हूँ कि आप वो बहनें हैं जो इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हैं, बल्कि आप औरों के लिए जी रही हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप। ईश्वर अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और खूब अच्छा फल आपको अता फरमाए। मैं फिर आपका बेहद आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और अब इसके साथ ही इस शुक्रिया के साथ इस वेबिनार की समाप्ति का ऐलान करती हूँ, इस उम्मीद पर कि इस डिस्कशन और इस प्रोग्राम से आप सबको बहुत फायदा हुआ होगा। हम सबको बहुत फायदा हुआ है। आइंदा भी हम इसी तरह के डिफरेंट इश्यूज पर इसी तरह बात करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।